Good evening, अरे guys. आप लोगों को गुड इवनिंग करना था पहले तो, बड़े लोगों को। Okay, so here we are, and I think some people are waiting live on the YouTube channel. Good evening, students. Good evening, teachers. Good evening, everyone. Good evening, guys. Good evening, everyone. गुड इवनिंग। So the agenda of this faculty roundtable, like last time we did, all of us were together, sitting in a farmhouse and chilling and then doing it. But today, because all of us are in different geographical locations, north, south, west, everywhere. Everywhere. So we have somehow managed to get everybody together here, and we'll be discussing the CAT 26 preparation strategy and the things that iQuanta has to do. We have planned a lot of new things for this year. And also, people might be thinking that 25 is around the corner, CAT 25. So why 26? We're talking about that. The reason is this is the right time. Uh, there's no right time for the right thing to start. But then somehow I felt that CAT is a test of life. When I say life, because it judges you in all the parameters, be it mathematical, logical, verbal, and not just that. After that, there is personal interview, communication. So everything that a man or a woman should have to be a proper modern 21st century human, CAT tests you in each and everything. Nothing is left. And that is the reason that even if it looks like a program of 4 to 6 months, in case of the written CAT, it's more than that. And we always feel as teachers that if someone starts preparing a year earlier, or maybe 1.5 years earlier, that's the best time because a lot of things are required. So we as humans and majorly Indians, it depends. Like people do not have habit of reading these days. People do not observe things properly. People do not calculate things quickly because we have calculators. We have this social media, and then we have very less attention span. So that is why we felt that let's start the program 1.5 years earlier so that we imbibe in you the qualities which are required to understand what CAT is all about and how to prepare for that. So you will be dealing with calculations, puzzles, sudokus, crosswords, reading, and a lot of other stuff which makes you mentally ready for clearing a CAT paper like CAT. So that is the reason that we are here, right? Yeah. So anybody wants to say something in this? So sure, this is definitely a good time to start, sir. Because see, जो लोग सेकेंड ईयर में होते हैं यूजुअली बीबीए सेकेंड ईयर में या किसी में भी बीटेक थर्ड ईयर में, तो उनके एग्जाम्स भी होते हैं आगे, है ना? Right. और जो करेंट ईयर में प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइक मिड टर्म एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, ऑल ऑफ दीज. सो इफ़ यू स्टार्ट लाइक इन फरवरी, मार्च, अप्रैल, so maximum time goes into this. Yes. So it's better you start now and you have your basics strong. And the time when we start mocks, like when we start mocks, you have your syllabus covered, and first mock onwards, you can start, being too competitive, analyzing your mocks Right. properly, and not in this situation that okay, I'm not done with even 50% syllabus or Yeah, 30% yeah. syllabus. What do I do? Right, Savannah ma'am? Is that correct? Yeah, you are right, sir. I mean, मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट्स को इसलिए जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए बिकॉज बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस एंड डाइग्रेशंस होते हैं. मतलब बोलने को एक ये होता है कि हाँ सज्जन ने स्टार्ट कर लिया था अपना कैट प्रेप 2025 के एंड में ही फॉर 26. फिर उसके बाद क्या होता है कि हर एक महीना कोई ना कोई एंगेजमेंट आता है सज्जन का. कभी तो ब्रेकअप होता है, कभी मेकअप होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, राइट? कहीं कोई विजिट होता है, कभी कोई आता है, आप कहीं जाते हो. तो इसलिए मतलब अक्सर मैंने देखा है बच्चों को दे शुड कीप सम बफर टाइम. पर ये इजियर सेड देन डन. हम भी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मैं तो बहुत करती हूँ इस मामले में, मुझे पता है. तो हम पता है यही सोचते रहते हैं अच्छा अभी तो टाइम है, ठहर जाओ, एक महीने बाद से करेंगे, एक महीने बाद से करेंगे. वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती, एज यू राइटली सेड कि अभी जैसे अर्ली स्टार्ट कर लो तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम विद द स्टूडेंट्स. Yes. So that's also one of the aspects. क्योंकि जो प्री फाइनल ईयर में है उनको प्रॉब्लम होगी. Right. हाँ, and even the people who are working, उनको भी बहुत Yeah. सारा वो तो और प्रॉब्लम में होते हैं कि उनको और मतलब फाइनल ईयर में ना फिर वो जो सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं ना सर, Yes. एएलपी सर, तो Yeah. वो बच्चा जब आकर के क्लास में पूछता है कि मैम मेरे ना एग्जाम्स हैं सर पे और कैट की भी तैयारी करनी, तो क्या करूं?
तो मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूं कि बेटा तू क्या सेमेस्टर एग्जाम छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता है ना। वो तो करेगा तो ही तो सर्टिफिकेट पे आएगा ना मार्क्स, ने तो कैट भी कंसिडर नहीं करेगा, भगा देगा कैट। तो Right. ये तो मतलब वो आएगा ही। आपके कांस्टेंट आपके एग्जाम की तैयारी होगी, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। सो बफर टाइम आई थिंक इज सो इम्पोर्टेंट फॉर, स्पेशली फॉर हम सारे इंडियंस जो हम ना हमेशा उसमें रहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन में। And in addition to it, the college going students, there are some people who are working. And in CAT, I think 50% people are there who are working professionals. So they even have lesser time because, and these days, the kind of work pressure that people are going through, we have a lot of articles and discussions going on across the globe. They for- cannot devote 3-4 hours every yeah. day. So there is a utopian state where 40 hours work week will be there. I don't know when that's going to happen, but people are working for 80 hours in a week, and they don't get much time, to prepare. So that is why starting early is the best bet. कमल सर बताइए आप कुछ। तो आप सब कैट सब आप गुणी लोग हैं, इतने सब टाइम से सब पढ़ा गुणी रहे थे। टीचर्स हैं यहाँ पे, अनुभवी हैं सब, बड़े अच्छे अच्छे रीजंस बता रहे हैं। एंड आई एम हियरिंग दिस वर्ड अगेन अगेन, अर्ली बैच। बैच का नाम भी लिखा है अर्ली बैच, है ना। तो अभी ये अर्ली हो गया है, बट किसी समय में दिस वाज द राइट टाइम। एक साल पहले जो है एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाती Right. थी। जैसे इस 25 की फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल की है ना। तो एट दैट मोमेंट ऑन दैट ईव वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू बैच हियर। लेकिन नॉर्मली पहले अगर आप कुछ साल पहले जाके देखोगे तो हम उससे काफी पहले जो है नया बैच अगले साल के लिए बैचेस कर देते थे। और दिस इज नॉट एक्चुअली अर्ली अभी, बिकॉज ऑफ बिजनेस ये चल पड़ा है कि आप 5 महीने में भी कर सकते हो, 6 महीने में भी कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आप सिलेबस पूरा करो। और दूसरा, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, so this is best deal for you. You are getting value for money. You are paying almost same fee, but you are getting much more time. Yes. तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। आप 6 महीने बाद ज्वाइन करोगे तब भी आप ऑलमोस्ट सेम फी पे कर रहे होगे, मे बी हल्का फुल्का कुछ डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम फी यूड बी पेइंग, यूड बी डूइंग द सेम सिलेबस। लेकिन अब आपके पास ज्यादा टाइम है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, दीपांशु टोल्ड मी कि ये सर जरूर बोलना। सो लास्ट ईयर व्हेन वी स्टार्टेड अर्ली बैच, तो उसमें कम बच्चे थे, अराउंड आई थिंक 50 to 100 स्टूडेंट्स वर देयर जो लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे थे। मतलब बैच में और ज्यादा होंगे मे बी, सो बट जो क्लासेस अटेंड करने वाले थे रेगुलरली 50 to 100 स्टूडेंट्स वर देयर। एंड एट दैट सेम टाइम पिछले साल के कैट की बैचेस की क्लासेस भी चल रही थी। एंड आई रिमेंबर कि जिसमें कम बच्चे थे, अर्ली जो बैच था 25 का जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें बच्चों का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। एंड वी वर एबल टू स्पेंड मच मोर टाइम ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तो आप जितना बैचेस को लेट ज्वाइन करते हो, लेट स्टार्ट करते हो, तो यू गेट लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द सेम सिलेबस। और अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतना यू विल बी हैविंग मोर टाइम टू प्रिपेयर। सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन इन एनी केस, एंड मनी वाइज और योर प्रिपरेशन वाइज, एवरीवेयर दिस इज विन विन सिचुएशन। Yeah. So Raj That's sir, why. what's your point of view? And before that, there is some confusion. Mind blend Hindi point of roundtable conference early batch. Yes, that's the thing, and like it is visible to us. And Yashvi, Sanya, Akul, Vaishnavi, Srinivas. I'm taking the name so that you know that it's visible. We're reading it. So Mind blend Hindi. We are here to discuss the importance of CAT. Why to start early, and what is going to be offered. That is the reason that we are here. Over to Raj sir now. हाँ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी नहीं। You guys are explaining Raj sir is everything. waiting for the right time. Correct. All right then. So we have prepared this thing, homepage in which we have discussed each and everything one by one. So I'll keep on explaining, and in between we'll also talk. We'll interact with each other, even the students. So this is the first thing. Step 1, if it is visible, the foundation modules. So what we have done, in our experience, we have seen people, lot of people actually, they quit mathematics after class 12th and sometimes after graduation. In the graduation, or after class 10th or after class 12th. So they somehow tend to forget things, right? So even if I stop doing mathematics, in 5 years I'll be forgetting. That is kind of the repetition that is required, or revision. So in 2 years or 5 years, a lot of people forget mathematics. And sometimes they're not very, kind of familiar with the topics. So for them, we thought of, we go basics in the class as well, basics to moderate difficult, that is the natural flow. But in addition to it, why not have some kind of recorded videos? And Kamal sir is there, so who has recorded
a brilliant module that is called non-engineers Quant. Why non-engineer? Because somehow the nomenclature is kind of a metaphor for the people who have quit mathematics. And oh, mind went Hindi, you did the same in class 10th? Okay, so what Kamal sir has done, that he has picked up all the NCERT books from 6th to 10th, and I think Kamal sir, you will be a better person to explain that. What exactly have you done there? Yes, I'm sure there must be many students जिन्होंने वो जो 25 के students हैं, they who have experienced it, they can certainly tell better on that. So, but yes, as sir was saying, we have taken all the topics from classes 6 to 10th which are relevant for CAT, and उसको school से जहाँ से आपने maths छोड़ दिया था, you will become unfamiliar with the topics. So we have started from there and we have taken it up to the CAT level. So you are not missing anything, and basically to bridge the gap. And I have been getting good reviews from so many students for last 2 years now. 24, 25, 26 तो अभी start होने वाला है. So certainly it is very helpful and better experience than just listening. Better experience it and say yourself. Sir, even I have heard, probably I know that you are connected with a lot of CBSE. You train people for the CBSE trainers, if I'm not wrong, and that is something which kind of connects you more to the fundamental mathematics. That's what my understanding is. So I would like you to throw some light on it, that how and what goes to your mind while preparing these kind of videos. Regarding CBSE program, so yes, I'm what you can call, I'm a source person acting on behalf of CBSE for training of teachers in various CBSE schools, mainly in Haryana, some places of Haryana, and recently we had a training program in Rohtak and in many other places nearby, in my nearby vicinity. So basically it is program for training of teachers, and in every school we find the same difficulty that students are not connected with the subject. They are no more interested in the subjects. So, and same things we find in our classes here as well, that sometimes student join तो कर लेता है बच्चा, प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स के प्रेशर में या फैमिली के प्रेशर में, but as I mentioned कि the students who are attending the classes live, that number is quite less. हालांकि काफी लोग ठीक है लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, that also happens, but still there would be many students जो बोलते हैं कि मैंने परचेज कर लिया था, मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की, मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा. There would be certainly some percentage of that as well. So basically we work on that part only, how we can make our classrooms better, है ना. So उसमें content is the best part, major part. Other gimmicks are also there, ये कर लो, वो जुगाड़ कर लो, ये ड्रामेबाजी कर लो, ये नाच गाना कर लो, वो सब चीजें भी होती हैं, but the best part is always content. So if you are good at content, then certainly you are going to learn from the sessions. And at iQuanta we work on that only, the different modules which has been mentioned on the screen here, which you can see, and sir अभी बताने वाले भी हैं काफी के बारे में. तो उन सब में वहां पर कोई नाच गाना नहीं है, वहां पर कोई जादूगरी नहीं है, वहां पर पूरा कंटेंट है, प्योर कंटेंट. यू कैन सी सज्जन सर है ना, तो सज्जन सर हमारे कोई नाच गाना नहीं करते हैं, ठीक है, बिहारी में तो डायलॉग जरूर बोल देंगे लेकिन मेनली इज नोन फॉर हिज गुड कंटेंट, है ना. और पोकर भी खेल लेंगे सर. हाँ, पोकर वो तो आपने खिलवाया था, मैंने सुना था आपने क्या मजाक बनवाया था सर का, है ना, कि व्हाट इज योर बेस्ट टीचर, हु इज योर बेस्ट टीचर. रील बना दी है. हाँ, मैंने देखा था, मैंने भी देखा था. मैंने रील थोड़ी बनाया भाई. So but the point is that here we are working on the good content. So if you develop your expertise, the confidence at the content, then at any moment, at any year, you can attempt CAT and you can get a good percentile. And I personally am example of that. एग्जाम देने जाना पड़ता है कई बार, जैसे अभी हमारे इंद्रजीत साहब बोल देंगे कि एग्जाम देने जाओ, पहले जो है हमारे और दूसरे साहब बोलते थे एग्जाम देने जाओ, है ना. सो तो एग्जाम देने चले गए ऐसे, नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, कभी कोई मॉक टेस्ट नहीं लिखा, एक भी मॉक टेस्ट नहीं लिखा, बट स्टिल ऑलवेज देयर वाज नॉट अ सिंगल ईयर व्हेन आई मे हैव गॉटन लेस देन 99, बल्कि 99.9 से ऊपर ही आता है, 99.92, 93, 95, हाईएस्ट आई गॉट 99.99. हमारे राज सर हैं जो 100 लाते हैं, पता नहीं कैसे लाते हैं, मालूम नहीं. सर वो चीटिंग करते हैं, आपको पता नहीं. कभी 99 से या 99.9 से भी कम कभी नहीं आया इसको. सो पॉइंट इज दैट ओनली कि इफ यू आर गुड एट योर कंटेंट, सो यू आर ऑलवेज रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, एंड दैट confidence you should develop, all of you should develop. That's what I wish. यहाँ पे एक राम चैल हैं जो कह रहे हैं I'm gonna join this batch because of Raj sir and Shamana ma'am. वाह, थैंक यू.
ओके सो ठीक है. तो सर बेसिकली ऐसा लगता है कि जो वीडियोस जब जैसे ही स्टूडेंट अपना एडमिशन लेगा तो सबसे पहले उसको जो क्वांट में खास करके वीक है या थोड़े से अनकंफर्टेबल है वो ये वीडियोस देख के ही क्लास में तो बेटर रहेगा, है ना, उसको लिंक कर देंगे क्लासेस के साथ. हाँ, तो ये इसका मेन मोटिव ये है. सिमिलरली वी आल्सो हैव LRDI एसेंशियल्स and VARC essentials. So VARC essentials, I think Shabana will be the best person to discuss about this one. Ma'am, over to you. The 500 words and the vocab list, all that stuff. Yes, I'm sure the students have already had a sneak peek at that. VARC Essentials हमारा एक मॉड्यूल है, एक प्रोडक्ट है. फखर से हम कहते हैं कि इट्स अ नाइस प्रोडक्ट. अभी जैसे कमल सर ने कुछ प्रोडक्ट्स बताए और भी अभी आप समझोगे. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये जो VARC Essentials है वो किस लिए है? वो मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना बिल्कुल ही पैदल लेवल पे मैथ्स में, तो उसी तरह के जो लोग VARC में थोड़े पैदल होते हैं, जिनका मतलब थोड़ा वीक होता है, व्हाट हैपेंस, रीडिंग सबसे बड़ा दुश्मन होता है. सो अभी जैसे सेशन शुरू हुआ तो ALP सर ने एक दो फैंसी वर्ड्स मारे थे, यूटोपियन एंड ऑल, है ना. तो सब लोग सर खुजाने लगते हैं कि अच्छा क्या बोला इन्होंने, क्या बोल के निकल गए, राइट. बट वो हमें पता है ALP सर का स्टाइल है वो. बट जनरली ये स्टाइल ना सबको नहीं आता है. कहने का मतलब कि हमारे वर्ड्स उतने अच्छे नहीं होते हैं. तो भाई ये वर्ड्स आपको सीखना होता है. सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि आप अंग्रेजी को कितना भी बुरा बोल लो, बट आपने जो टेस्ट चुना है ना, कैट देना आपको, कैट 2025 या 2026, अब तो हम 2026 की बात कर रहे हैं, उसमें आपके जो 4 पैसेजेस आएंगे उसमें आपके छक्के छूट जाएंगे, पसीने आ जाएंगे आपको, अगर आपकी वोकैबुलरी तमीज की नहीं है तो. सो तमीज की वोकैबुलरी बनाने के लिए ये प्रोडक्ट है आपके पास, VARC एसेंशियल्स. उसमें बेसिकली इसी तरह के फैंसी वर्ड्स होंगे जो आपको मिलेंगे, आपको उनको उठाना है. और अब मैं एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ आजकल अपने स्टूडेंट्स को, उसमें से वर्ड उठाओ. वैसे तो उसमें प्रशांत सर ने, जिन्होंने उसको क्रिएट किया है, उन्होंने उसमें एक्सप्लेनेटरी वीडियो दिया है, उन्होंने एक आर्टिकल भी दिया है उससे कनेक्टेड. लेकिन स्टिल अगर आपको अपने हिसाब से पढ़ना है तो वो आप वर्ड वहां से उठाओ, चैट GPT भैया के पास जाओ और उनको बोलो कि हमको इस पे ना एक बहुत सिंपल सा आर्टिकल निकाल के दे देगा वो आपको. दैट इज द बेस्ट वे टू टैकल दैट VARC एसेंशियल्स बिसाइड्स प्रशांत सर के एफर्ट्स, जो कि बहुत सारे उन्होंने डाले हैं उसमें. ठीक है, तो ये वाला तो मतलब टेक इट एज योर बाइबल. जब आप शुरू करोगे ना इस पे सब्सक्रिप्शन लेकर के, आप जब स्टार्ट करोगे हमारे साथ तैयारी, तो ये साथ साथ चलना है. और ये जान लो आज आप पहले ही इसमें दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस. अगर आप सोच लेते हो कि रीडिंग को हम किनारे कर देंगे, प्लेटफॉर्म पे बेचारा बैठा रहेगा, बाकी हम लोग सब ट्रेन में चढ़ करके निकल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस जो आपकी VARC की गाड़ी को पार करेगा. क्योंकि पूरे साल वरना मैं भौंकती रहूंगी आपके पीछे, बोलती रहूंगी आपके पीछे कि भाई वोकैब इंप्रूव करो, ये सारे वर्ड्स पढ़ो. तो बेकार मेरी ये सारी बकवास सुनने से बेहतर है ना कि आप पहले VARC को VARC एसेंशियल्स को पकड़ लो, उसको आप रख लो. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट प्रोडक्ट इन सिंपल लैंग्वेज. इट्स फैंटाफैबुलस. बहुत ही अच्छे एफर्ट्स उसमें डाले गए हैं एंड आई रियली सजेस्ट यू गाइज स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दैट. मतलब बस इसको इतना जो काफी है VARC जो एसेंशियल्स. इंजीनियर्स VARC है इसको क्लासेस के पहले ही कर लेना चाहिए या ऑनगोइंग होना चाहिए, आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? यू आर टॉकिंग अबाउट VARC एसेंशियल्स और इंजीनियर्स VARC? VARC Which one? essentials. Essentials, right? No, that should be an ongoing process. Yes. I mean, nobody can imagine this कि हाँ पहले ना you finish all of those words, 500 words along with explanation and reading and everything, and then you get down to the passages and all. उसके बाद फिर ये सोचो कि मैं तो reading नहीं करूँगा. This is like an ongoing process. This is something similar to हम daily अपना खाना कितना भी change कर लें, passages कितने भी change कर लें, but पानी तो हमने पीना ही है ना. Right. अब वो बियर, वोडका, फ्रूट जूस पी करके तो वो हाइड्रेशन तो नहीं आने वाला है बॉडी को. सो एवरी सिंगल डे वी नीड टू ड्रिंक वाटर फॉर दैट नेसेसरी हाइड्रेशन एंड स्किन एंड हेयर एंड एवरीथिंग. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट VARC एसेंशियल्स इज. आई होप प्रशांत सर आप कहीं बैठे देख रहे हो, कितनी तारीफ कर रही हूँ मैं VARC एसेंशियल्स की. Okay, so the next is LRDI essentials. Now this is the product out of these 3. We made it in the last product in this essentials. The reason was simple because we were thinking, people have done English in their schools and even colleges, at least in schools. People have done mathematics, at least in schools again. But LRDI, what is that? Is that even a subject? Did we really solve puzzles? Did we really solve any kind of chess gambits in the real world or in the schools? It did not happen. So why
Why? If you look at CAT, someone looks at CAT, the student, he says, okay, I know English, okay, it's a language. Mathematics, I know a bit of it. But LRDI? What is that? What is that? So we felt like there is no module present on the entire world right now which will be discussing LRDI in such a way that it becomes a subject as a whole. So this was developed by Raj sir, Kamal sir, and me. We combined, a lot of videos were there which we made, and we treated every single LRDI aspect, in every topic and concept, sub-concept, in such a way that becomes a kind of a theorem, an observation, a generalization. And we also discussed that how any examiner or a question creator tries to complicate the situation, and how a simple looking puzzle becomes complicated. So we went into the mind of examiner, and that is how we created it. So I would like Raj sir, Kamal sir, anyone to throw more light on it. Like what came to your mind when you were preparing this product? प्राइमरली आप दोनों ही नहीं बनाया था, मैंने एक दो सेट बनाए थे, तो प्लीज कैरी ऑन. कमल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, नहीं, जैसे आपने बिल्कुल कहा, सही बात है. सो एलआरडीआई एसेंशियल इसी तरीके से बनाया गया था कि टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज एक्चुअली एलआरडीआई, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे डील करते हैं. ऑल्दो हमने एलआरडीआई एसेंशियल से पहले एक और मॉड्यूल भी बनाया था, दैट वी विल बी एडिंग आफ्टरवर्ड्स. सर बताएंगे एलआरडीआई इंसेप्शन. बाद में आएगा सर, बाद में आएगा. वो हमने जो बनाया था, हालांकि उसका नाम तो रखा था एलआरडीआई इंसेप्शन. इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग एक तरीके से, बट दैट हैड गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. तो हमने फिर उसको टू स्टार्ट विद द बेसिक मॉड्यूल, जैसे हमने क्वांट का नॉन इंजीनियरिंग क्वांट बनाया है, वर्बल का भी एसेंशियल्स है, तो इन द सिमिलर लाइंस एलआरडीआई को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि जो लोग एलआरडीआई से कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें टू डिस्कस ऑल द वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड, कैसे इजी होता है, मुश्किल होता है, एंड ऑल एस्पेक्ट्स दे आर डिस्कस्ड इन दिस मॉड्यूल. And so it is really a good introductory module for LRDI. Yeah. So this is the step one, the foundation modules. Still, we are not discuss the classes and how to cover the concept. This will be given to you in terms of self-paced videos. It's open for everyone. People just go and watch it whenever they feel like. Now coming to the concept coverage. Here in the VRC, we have discussed about it, everything. Ma'am has told about VRC essentials. It's 70% reading and practice, 30% vocabulary from multiple sources. So ma'am has already explained that, and this is how it looks like. Video explainer, the article, and the RC practice. So in addition to ma'am, the vocabulary part of it and the article which you explained already, there'll also be RC practice, one RC based on that in this module. Yeah. And then we discussed essentials as well properly. These are few snippets from them. Okay, there are 35 plus videos, overall 15 hours का content है in LRDI fundamentals, and you just ये तो सर ने बता ही दिया है already. Now coming to the proper concept coverage where the actual classes happen, which are mentor driven. So we come in front of you like the way we are right now, and depending on the topic and the specialization of all the faculty members, so they'll be taking classes based on, and there is a flow to it. Okay, in Quant we have a flow, in VRC we again have a flow, in LRD we have a flow, and based on that flow we conduct classes, live conceptual classes, which are composed of, all of you must have seen that, you have been taking classes for so long. We'll be doing some topic, subtopic, concept, subconcept with a lot of practice questions in the real classes. After that, once the live class is over, so this is the team. I think all of us are visible also. This is the team which will be there. Indrajit sir is the CEO and founder, and then all of us. Shabana ma'am, Kamal sir, this is me, Raj sir, Prashant sir, and Sajan sir. Okay, then comes the application class. Now, so application class is a very weird sounding kind of concept, but once it starts, it becomes people's favorite. I'll tell you why. Because normally what happens, you go to a class, you study something, then you go back to your home and try to practice questions on that. Sometimes you do, sometimes you do not. Sometimes you get, sometimes you have some other commitments. So we have made it a way, in such a way that people will be disciplined to practice questions on that. That is what application class essentially means. The name is suggestive. Application, so application of the concepts that were taught in the live classes. So that is how it goes, and after every live class there will be an application class. In fact, when the batch starts in full throttle mode, there will be 6 days application classes and 3 to 4 live conceptual classes every day. So this is a kind of a tradition or a culture that we have established at iQuanta, so that people
study something and practice with us. Okay, so even if you don't get much time to practice on your own, you just attend these classes and that will be a lot of practice. Vaishnavi, I think, okay, I just told you, live classes, 3 to 4 days, application every day, 6 days. Sunday will be on off, but Sunday also will be doing something. I'll tell you what. Now, apart from that, let's say you want to, practice some questions on your own. So there'll be dashboard assigned to you guys. On the dashboard only, the classes will be there. On the dashboard only, there will be those modules which we discussed earlier. On that dashboard, we also be having some assignments. So it looks like this. There are 80 quant assignments, which is approximately 1,200 questions, 30 LRDI assignments, and 50 VARC assignments. So these are for your own practice, your self-paced practice. Okay, this is rigorous practice, step 1. Now coming to rigorous practice, step 2, special initiatives. Special initiatives are these happens in our Facebook group. So daily LRDI with 150 plus sets, daily RCs 100 plus sets, daily articles. These are the kind of curated articles from various sources, Eon, Medium.com, multiple things. 100 plus articles are there, and they'll also practice sessions. So even on Sundays, we'll be with you. Sometimes on Sundays we'll be having some kind of practice. Mentor-driven practice, mentor not visible to you, we'll be doing it via comments and replies. Now, coming to next one, that is step 3, IIM ABC practice batch. This is an add-on module. So let's say you are done with all the classes, all the dashboard assignments, you want more material. This comes into picture, and this will launch in the month of July, every month of July. Here, we'll be having 7,500 plus CAT level questions, out of which some part is static, some part is dynamic. When I say static, it's self-paced. 250 exact CAT level RCs and LRDI sets, and 1,250 quant questions. That is static. You can do it on your own pace. And dynamic, when mentors will be there. 3 RC set every day, 3 LRDI every day, and 12 quant questions every day. That will be topic-wise. So all of this comes in the practice. Now the advanced module, which we are talking about, Kamal sir, here we are, the LRDI inception. So you're looking some videos, this is me, Kamal sir, Raj sir. So all 3 of us did something. I won't say it myself. I think, sir, over to you guys. Please tell me something about this, and students, enlighten them. Raj sir and Kamal sir. I had already talked about this, so I think Raj sir बताएंगे तो अच्छा लगेगा. Yes. LRDI inception was more like giving a real sense of depth of sets that can be there, that can be solved. And the questions were quite humbling. They could bring anyone on ground in no time. And also the solutions that they were created, they were very helpful. They are helpful. ठीक है, बस इतना ही. बाकी आप लोग बताइए. So there are 50 sets overall in LRDI based on various topics, that numbers-based, quant-based puzzles, distribution-based puzzles, games and tournament, etc. And these sets were, I would say, developed, in some cases curated by us, directly by the faculty members who have got loads of experience. And we intentionally made these sets to be really difficult. If not difficult, then at least moderately difficult. So, and this will be unlocked afterwards, not in, I think after 3 to 4 months, it will be unlocked when you have completed at least 70% of the LRDI syllabus. Similarly, in advanced module, there are more things. Like step 2 is engineers VARC module. This was created before the fundamental बाद में दिमाग में से लाया कि ये भी कर लेते हैं. So here, there's RC strategy, parajumble strategy, and a lot of, so it'll be kind of, there are 50 videos, 50 topics in which we have chosen 8 different genres, and every genre has 5 sets, 5 RC sets, and then 10 parajumble sets, 10 verbal sets with strategy. So this was created keeping in mind that things, so basically what happens when you read this is self-paced. So when you open one set, first of all, the glossary is given to you, the words which can be difficult, and we have also kind of taken into consideration that some words which might look easy to us, easy to people who are voracious readers, but not those who are and simple words. For example, words like any simple word जो simple है लेकिन कई लोगों नहीं पता होगा, ऐसा word दिमाग में आ रहा है आपके? किस चीज के लिए?
कोई भी word, any word, which might look simple to you but might not look simple to others. Those kind of words are also Paraphernalia. paraphernalia. Paraphernalia is not. I think this is a difficult word. Even more simpler. लड़ लो तुम लोग से. Autonomous एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही सिंपल है, जो लोग यूज करते रहते हैं, बट autonomous is something we have discussed, even those kind of words in engineers, VARC. So autonomous is connected to auto, right? हाँ मतलब Yes, ma'am. It's connected to auto, and then later you Yeah. can connect it to car. Yeah. Okay. Then QA conceptual videos. So all the sub-concepts have been given over there. Profit, loss, and also practice questions. This is advanced module. Then comes mocks and sectional. But before that, I think we'll take a break from this and let's try and interact with a lot of students have some doubts, some queries. So I would like to take that up. Sir, before that, I have a query. Yes, ma'am. How many pairs of chashmas do you have? I lost count, but I think last time I counted, it was more than 20. Seriously. Yeah. Nice collection. Good. ऐसा कहीं तो खर्च करेंगे ना. हाँ, सही बात है. जैसे मैम ट्रैवलिंग में खर्च करती हैं. आज ही अखिल बोल रहा था that ALP sir is supposed to come to Pal wherever he lives, na? So he has invited me also. So जब भी आप जाओगे, so let me know. I'm always ready for travel. Sure. And he has got a huge estate. It's not a house. It's not a I manor. know. It's like a manor actually. So it's not a manor. It's an estate. So it's like so huge that people cannot even walk through it. So you will need some kind of vehicle to go across his estate. So it's huge actually. Okay, coming to Abhilash Sinha. Orange t-shirt wale sir, very good. Orange t-shirt, Raj sir. Teaching experience, I don't remember his name. He's Raj sir, Abhilash. Okay, Sanya. तो वेरी गुड किस चीज पे बोल रहा है सर के अपीयरेंस पे? नहीं, very good. उनके he watched lot of videos. I love the way he is teaching. Some words here and there, but basically he wants to say he loves the way he teaches. His name is Raj sir, Abhilash. Sanya, timing of the batches. There is a WhatsApp group attached to link of it in the description. Just go there, click on that. You'll be added to a WhatsApp group and all the updates will be sent over there. Tanishk, few of us are working professionals, including me. Can you please tell us how to be consistent and dedicated with the course so that both job and studies could be managed all together? Tanishk, okay. Also, please lighten us with some guidance for the prep strategy. Yeah, we have a slide for that as well. But also, this is a question which cannot be universal. It's a subjective question. Depends on what do you do, what's the job profile, how many working hours, working days you have. It's 5 days work, 6 days work. So all depends on that. But if I want to, tell you something which will be universally acceptable is just follow, trust the process and follow it. Automatically things will be in sync. But assuming that you have 5 days work, in those 5 days, if you just attend the live classes and application classes and solve a few questions, let's say 10 or 20 questions, not more than that. And in the weekends, you study for 10 hours. What to study, how to study, we'll be discussing that as well in the upcoming sessions. So that is what you can do overall. Vaishnavi, even I am working. Okay, Vaishnavi, that's great. Yashvi, who would be teaching us LRDI. Yashvi, LRDI will be taught by multiple people. It's not just one. It will be Raj sir, it will be Kamal sir, Sajjan sir, sometimes me as well. So, yeah, that's how it goes. Srinivas, I enrolled in early batch, so I can learn any module randomly, or is there any way to do it? Srinivas, there is a way to do it. As I told you already, depends on what you are not comfortable with. If it is Quant, watch all the Quant videos. But the best way is to align it with the live classes. So you will be sent a schedule, the weekly schedule, that what classes will be there. And based on, so let's say there is a percentage class tomorrow, finish percentage from the non-engineers Quant module a day before. That's how you can go about it. Tanisha, live classes will be there on daily basis. Yeah, live conceptual will be 3 days and the application will be all 6 days. Ankit, I don't know English well, so how will I prepare? Ankit, ma'am, Shabana ma'am, over to you. Ankit says he doesn't know English much, so how he should prepare? Where is Ankit? पहले सामने लाओ इसको. Yes, Ankit. Sir, I don't know English well, so I will prepare.
तो वो तो तुझे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, इंग्लिश नहीं आती तो करेगा ही, ये क्यों बता रहा है हमें? राइट अंकित, ऑन अ सीरियस नोट, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश इवन बिसाइड्स द कैट थिंग। फिर अगर आपका इंग्लिश वीक है, चलो मैं इसको हिंदी में समझा देती हूँ, अगर आपकी अंग्रेजी वीक है, आपको अलग से भी काम करना पड़ेगा अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए। और अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए अंकित, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, रीडिंग आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको वोकेबलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जरूरत पड़े तो अमेजॉन नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश वाली मूवीज देखो विद सबटाइटल्स, अचीवर्स के इंटरव्यूज सुनो जो कि इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पे काम करोगे तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, दरवाजे खुलेंगे जो इंग्लिश के बंद हैं। उसके बाद ही आप सोच सकते हो कोई हाई लेवल का टेस्ट देना। सो कैट आप कर सकते हो बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप इट्स क्लियर अंकित। He will reply in a while. हाँ, Okay, Yashvi has just said suggestion है यशवी का कि suits देखो. Okay, suits is a nice yeah, series. yeah. Suits is really something that I have recommended to, I think, more than 200 students of mine. Okay. And people have really benefited from that series because बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साफ सुथरी अच्छी चीज है, बिल्कुल देखने लायक, और इंग्लिश उसमें फाड़ू यूज की गई है, बहुत जबरदस्त है। सो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं इंग्लिश के लिए, सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरे मुंह से वही निकलता। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं जो मैं दे सकती हूँ, बट शुरुआत उससे कर लो, बहुत अच्छा है। Great. Manan says, sir, any tips for LRDI like Sudoku, chess, etc.? I think I'm giving a lot of tips. I want to, I want to invite Raj sir, Kamal sir, and Sajjan sir also, who are keeping quiet for such a long time now. Sir, obviously I can give the tips, but I want you guys also to, give some tips, chess and all that stuff. Yeah. सर, हाउ डज चेस हेल्प इन LRDI? समझाओ मुझे, मैं ही समझ लो स्टूडेंट हूँ, मुझे बताओ। लाइक ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मेट या डायरेक्ट मेथड नहीं है जो कनेक्ट कर रहा हो दोनों को। एक चीज ऐसे. हाँ, Ma'am, it once happened, I don't remember the year, probably Raj sir or Kamal sir might be knowing it. So there was a question on chess gambit. याद है? एक chess gambit अच्छा। पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, LRDI पजल था एक. कैट में कैट में पहले किसी प्रीवियस ईयर में था. अच्छा, यस। हाँ, chess gambit was there. So gambits are the specific moves, specific, not the most situations in chess where मैंने गैम्बिट तो वो सीरीज देखा है। Queen's Gambit is a Queen's brilliant, Gambit. brilliant Queen's series. Gambit, All kids yeah. should watch it. So chess, there was a direct question, chess gambit, and apart from that, yeah, you were saying something. हाँ, कैसे help करेगा? इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग द लॉजिकल स्किल। तो उसके लिए आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? यू कैन नॉट डायरेक्ट स्टार्ट बाय सॉल्विंग LRDI क्वेश्चंस, राइट? कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फ्रॉम डैशबोर्ड और बुक्स। So that's why you need to start developing your logical skills by doing small puzzles or games like chess, so that you can put some pressure on your mind. For years, you तो have आप ये कह रहे हो कि जैसे हम VRC इंप्रूव करने के लिए क्रॉसवर्ड का सजेशन दे सकते हैं, उसी तरह से आपका Kind सुडोकू of. और चेस। क्योंकि लोग Okay. पजल सॉल्व नहीं कर रहे होते ना मैम। यहाँ पे चीज़ है, Usually- क्रॉसवर्ड और चेस को कंपेयर नहीं करना चाहिए. नहीं नहीं, वो कंपेयर नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा लॉजिकल रीजनिंग में उसका कंपैरिजन में सुडोकू आएगा सर. हूँ- हाँ, नहीं Crossword मैं का- VRC के लिए क्रॉसवर्ड। वही मैं कह रहा हूँ, VRC में क्रॉसवर्ड तो LRDI में वैसा सुडोकू होगा. हाँ, थोड़ा कंपेरेबल है. और मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीजें एक ही चीज के लिए हैं कि दिमाग पे प्रेशर पड़े, कि आप ना सोचना चालू कर दो अगले 2-3 स्टेप, या जैसे LRDI एसेंशियल्स और VRC एसेंशियल्स ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है ना, जो एकदम ही वीक है VRC में या LRDI में, जिनको आइडिया ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है। सो दीज मॉड्यूल्स आर ऑल अबाउट दैट, कि आप क्लास से पहले इनके वीडियोस देख सकते हो और यू कैन बी रेडी फॉर द क्लासेस। तो आप चेस भी खेलते हो पोकर के साथ साथ? चेस तो हम दोनों ही खेलते हैं मैम. थोड़ा बहुत चेस खेला है We मैंने। both play chess. नाइस। I don't know about Kamal sir, Raj sir. Do you guys play chess? इवन आई प्ले, लेकिन वही मतलब जैसे बस आपस में बैठ के ना, सो नेक्स्ट टाइम आई मीट यू गाइस वी आर गोइंग टू हैव अ चेस का राउंड। मैम ऑनलाइन भी हो सकता है chess.com पे. नहीं भाई ऑनलाइन में वो वाइब्स नहीं आते भाई ऑनलाइन में। हम तो जीत सर के ऑफिस में बैठ करके खेलेंगे, वहीं पर सब टीम बना करके खेलेंगे। ओके, एक चेस में एक प्रॉब्लम है. हाँ, सॉरी सर, बोल रहे थे आप कुछ. हाँ. I play chess to make sure the win happens for the opposition. क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये तो पॉलिटिकल चेस है. हाँ, मैं खेलता हूँ सर दूसरों इसको के लिए। प्लान करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपोजिशन जीतता ही है. अच्छा, चेस में सर एक खतरा भी है, पता है. मैं आमतौर पे कैट स्टूडेंट से चेस खेलने को नहीं बोलता. रीजन ये है कि बहुत एडिक्टिव गेम है.
कई बार ऐसा होता है ना कि लोग फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के चेस खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ खुद, जब मैं चेस खेलता था बचपन में, मुझे याद है ना कि एक सर 2 दिन गेम चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, उसको हम बोर्ड को नीचे बिस्तर नीचे रख रहे हैं कि अगले दिन आएंगे फिर ये खेलेंगे। ऑनलाइन चेस की वजह से वो आदत खत्म हो गई। हाँ, तो वही जो ये आप बोल रहे हो ना, मुझे भी चेस में यही लगता है कि भाई इतना स्लो गेम। और पता है मैं किससे उसको कंपेयर करती हूँ चेस गेम को? पाकिस्तानी ड्रामों से कंपेयर करती हूँ। इतने स्लो चलते हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, आइए जनाब बैठिए फरमाइए, उतनी देर में तो हम 4 डायलॉग्स बोल के निकल रहे हैं। तो चेस का भी वही हाल है, सो रहे हैं लोग, खेल रहे हैं। एक क्यों तो खेल रहे हो भाई? क्वेरीज आई है। रामचल is again asking sir timings of the batches. Ramchal, timings of the batches, it would be 7 to 9 and one timing will be 9:30 to 11:30. Again, if you want these details, then you can also go to iQuanta.in and on the top you will see डिस्क्रिप्शन में हाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। यू विल सी अ ग्रीन स्ट्रिप एंड यू कैन क्लिक देयर एंड ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन फाइंड एवरी सिंगल डिटेल्स। एक तो और है जगवंदन, हाउ मच टाइम इज बफर टाइम फॉर फाइनल रिजल्ट आफ्टर टेकिंग एडमिशंस इन college? 6 months. So let's say what I'm assuming from the question is, if you take admission in a B school, which will be in the month of June majorly, so you'll be getting a time till December to produce your original certificate. Okay, Avnish says, how should we approach solving LRDI? Like, can you directly like a topic and start solving? No, Avnish, that is why we have LRDI essentials. Correct. Just go through that and then start solving after taking some classes. Tanishk, I'm a software development engineer in test Java. Okay, great. My shift timings are 10 to 6 p.m. 5 days a week, and for CAT, my basics are really slipped off. Now I need to study. Tanishk, I think you have the proper timing and a lot of time is left because the classes will be happening after your job shift. So just follow the process, trust the process. So take all the classes because the conceptual classes will be happening 3 or 4 days a week. So you'll be getting time for that. In that time, try to solve 20 questions at least for Quant. If it is LRDI, solve 2 sets. If it VRC, solve 2 sets again. And on Saturday and Sunday, study for at least 10 hours. That is what you can do. Okay. Yashvi, I have an issue that I have been fed the wrong sort of English, daily spoken English between friends. And it appears to be a bit hard for me to forget that. क्या लिखा है? that and adopt the correct one. Any suggestion? Yeah, Yashvi, change your friends. Okay, change your friends. And if you can't do that, be friends with us. And jokes apart, what you can do, like ma'am already said, that you should watch a few movies, series, read some books, or read editorials. That is going to help you a lot. But coming to communication, the English communication, see, in communication we are not always grammatically correct. That same goes with any other language, be it Hindi, be it Punjabi, Sanskrit, whatever. But the problem is when you start writing wrong English, okay, or when you start understanding wrong English, that is the problem. So for that, needing the improvement should be in vocabulary, flow of sentences, basic grammar should also be read once because people forget basic grammar while communicating. So you can do one thing, probably ma'am, am I right in saying that in the first 7 days she can go through the grammar once? बरोबर. Ren and Martin maybe. That is a good book because I followed that when I was a kid. Just do that and do all the stuff that ma'am has said. That is going to help you a lot. Anavi Marothia. Sir, we aim good IIMs and top B schools without any work X. So would there be any disadvantage for us to chance? No, Anvi. Work X, okay, I'll tell you the statistical data for it. 5 marks have been assigned for work X. Any fresher would be getting 1.5 marks. So वो तो मिलना ही मिलना है. Remaining 3.5 is for the works that you have. So let's say you miss on 3.5 marks, but the other things are also there. For example, your CAT score, your PI score, your academic diversity. If you're not an engineer, you'll be getting extra points. Being a female, you get extra points. So whatever you have missed out on the work X, you'll be getting it through different other parameters. So just focus on CAT. Sanya, by when will the basics and concepts be cleared? And when will the time for actual CAT mocks? And that's a good question. Basics and I would say the syllabus would be once over, twice over within 5 months, not more than that. Maybe 6 months at max, because we also take some workshops, some boot camps we do, and the mocks will be starting in the month of June. That's what we do, just before 6 months of the real CAT. So that is the time for actual CAT mocks. That's the time we actually release the mocks. Manan, it consumes my daily 2 hours, but I'm slowly reducing it. That's great. Okay, I'm back. Mind Hindi. Oh, you're welcome. Astha, I'm a second year student. Do I also need to focus on profile building? And I don't know what should I do. I'm not getting an opportunity. Okay, Astha, that's a very good question. A lot of people ask me that. And you know what? Profile building is a very vague topic. So
One is like you have work ex, which you cannot have because you're a secondary student. You can, even if you work somewhere, it won't be counted as a work experience. It's not quantifiable. Right. It can basically be some kind of internship which you can do. Apart from that, to build profile, you can subscribe to certain courses like data science or maybe generative AI, prompt engineering. That can be done if you have interest. If you don't have interest in that, don't do it. So let's say you have interest in some kind of social work, you can go to some NGO, teach kids in your weekends. That is something you can do, but that won't be quantifiable for CAT. So if you don't do it, it's not a problem. The main thing that you should be doing is preparing everything for CAT that comes to the written and communication. That is what you should be majorly focusing at. That's the best profile you can have. Tanisha, how can we manage college studies with CAT? Okay. I'm in second year doing BCom because CGPA has an impact on profile. Tanisha, that's right. CGPA has an impact for sure. And how can you manage? That depends on your college actually, Tanisha, I cannot be talking about you per se because I don't know, which details. details. So you give me more details, probably I'll be able to guide you. Anvi, what will be your, okay, I told you already. Yashvi, yeah, the issue is that I know the grammar, but I fumble it up while communicating. That is not an issue. Yashvi, why ये जो बोला change your friends, and even if it looks like a joke, it's a reality. Change the way the people who you're communicating with. Make a group, a kind of a self-help group maybe, and iQuanta. There are a lot of people in CAT preparation iQuanta group. Just go and post it. I want a group to communicate. People will be there. They'll be ready for that. So you can create a group. You can probably through different online channels you can connect with them and try to discuss each and everything in English. Be it the academic doubts, be it anything else. Raj sir is cancelled. Mind blend. Is it enough time if someone starts now for CAT 25? Even though I have been preparing for the last 2 months, just asking for someone who starts now. कुछ सर राज सर प्लीज आप आंसर दीजिए अब मैं बोलने लग गया join the crash course as simple as that we have already started the crash course mind blend so बुला रहे हैं हम आपको आ जाइए आपने एक क्वेश्चन पूछा है as long as sorry ma'am you have completed no you go on now मुझे तो बस उसको दावत देनी थी that's it done as long as the question is it enough time the answer is no. If the question is, have people done it in the past? Then the answer is yes. If the question is, will I be able to do it? Pehle hi no. If the question is, if I work for 10 hours every day now onwards, then the answer is the chances are very good. Correct. So the right question is very, very important. And not only questioning is going to be helpful. अपनी तशरीफ को अपने शरीर को एक जगह टिका के बैठना पेन पेपर के साथ काम करना बड़े लंबे समय तक इफ यू डू दैट देन ओनली द चांसेस आर गुड अदरवाइज नो कोई बेकार में फॉल्स होप करने की जरूरत नहीं बड़ी मेहनत लगती है 4 लाख लोगों में से 10,000 में आने के लिए बड़ी मेहनत लगती है इट्स वेरी इजी टू एलिमिनेट 3,90,000 पीपल जो मेरा फेवरेट सेंटेंस और मेरा फेवरेट जेस्टर है ऐसे करते हैं और 3,90,000 बाहर ठीक है so you decide which part you want to be adding on to what sir said and maybe not just adding paraphrasing in the same way CAT written stage is rejection stage it's not selection stage selection comes later on जो 3,90,000 मतलब जो भी है मतलब इतने लोग जो निकल जाते हैं that is basically rejection stage so not to get rejected is the main thing you should focus upon in the month of November after that comes the selection which we'll be discussing GDPI etc and VAT well Meena I have 2-year gap so how to fulfill it you cannot fulfill it past cannot be changed right Meena that cannot be changed but what can be done right now is the present that you have in your hand try to prepare for CAT as much as possible and how to justify a 2-year gap you connect with me I'll tell you once you get the call okay that's not a problem I'll tell you what to say over there Tanisha I'm currently studying in University of Delhi BCom second year please guide me how to manage college study with CAT Tanisha again that depends University of Delhi में पहली बात तो depend college में हो सर को दो आप ये क्वेश्चन सर को दो सर राज सर को yeah Raj sir please you won't be able to manage it nonsense फिर से गलत सवाल है किसने बोला कि तुम्हारी इतनी एबिलिटी है कि तुम मैनेज कर लोगे somebody was asking about job you chose the job and somebody chose you over 10 other people and you were very happy when you got the job similarly you were very happy when you got the admission in Delhi University bullshit so please get out of wrong questions
Get out of the wrong setups. There is something that is very difficult you are going for. But there is something very beautiful that you are going for. If it is beautiful, it has to be difficult. So, wrong notions से start नहीं करना है. It is not a lollipop. You go and buy for 10 rupees, 50 rupees, 2000 rupees. It doesn't happen like that. There's a lot of work that is required if you chose something. Okay, now coming to the normal language. If you chose something, you took the responsibility of it. Don't blame it for anything now. जॉब को और क्लास को कुछ कॉलेज को ब्लेम मत करो. पहला चीज ये है. दूसरा, इज इट रियली नेसेसरी फॉर यू? इफ द आंसर इज यस, कंटिन्यू विद इट. Is college required for CAT exam? Obviously, you have to clear your graduation. So there is a due requirement of time that and effort that you will have to give there. That is one, which is very clear. There is no negotiation on that. Who will do it? मैं थोड़ी ना करूंगा, तुम्ही को करना है. तुम्हारा भाई या बहन करेगा, नहीं करेगा, तुम्ही को करना है. So stop thinking about managing it because you won't be able to manage it. You work on the basis of the priority of a day. आज मेरा कॉलेज का एग्जाम है, तो आज मैं कॉलेज के लिए पढ़ूंगा. आज कॉलेज का एग्जाम नहीं है, तो मैं पूरे टाइम कैट की तैयारी के ऊपर लगाऊंगा. दिस इज द ओनली वे टू डू इट. प्रॉब्लम यह है कि तुम इसके साथ अपना रिलेशनशिप, अपना फैमिली, अपना अफेयर, अपना स्पोर्ट्स और बाकी सारे ड्रामेबाजी भी इसमें मैनेज करना चाहते हो. दैट इज द इश्यू विद द वर्ड मैनेज. व्हेन यू से दैट, गेट आउट ऑफ दैट कंप्लीटली. बाकी सब चीजें बंद कर दीजिए, तो चांसेस बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है, कॉलेज का या जॉब का अगर तुम्हारे लिए जरूरी है, कंटिन्यू करो. नहीं जरूरी है, बंद कर दो. 10 लोगों से पूछोगे, सब अलग अलग ज्ञान देंगे तुमको. अरे जॉब में ये करो या ये छोड़ के वो कर लो, कुछ नहीं होगा सबसे. इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर लाइफ, कंटिन्यू विद द जॉब, एंड व्हाटएवर अदर टाइम यू हैव, जस्ट डेडिकेट इट ऑन कैट. तुम्हारे बैकग्राउंड में दिमाग में 4 और चीजें भी चल रही है, उसको ना ऐसे कट करके डिलीट कर दो. अच्छा, एज आई ऑलवेज से, either you understand this fact today willingly or you understand 1 year later forcefully. करना यही है. बाकी अपनी अपनी चॉइस है. बाकी एलपी सर के पास बड़े अच्छे शब्द होते हैं इन सब बातों को समझाने के लिए. तो भाई चलो लॉलीपॉप दो सबको. नहीं सर, लॉलीपॉप नहीं है वो भी रियलिटी ही है. जो आप कहते हैं वो भी रियलिटी है. थोड़ी वो हार्ड रियलिटी है, जो मैं बोलूँगा सॉफ्ट रियलिटी होगी, बट रियलिटी ही होगी, लॉलीपॉप नहीं होगा. इनफैक्ट देयर इज अ पीपीटी दैट आई हैव मेड. A lot of people have the same query, not just Yashvi, even Anvi is asking that. Tanisha is also asking that. So I made a PPT that what should be the exact plan. And somebody also asked that, Anvi asked that topic wise, how it should be going. Okay, we'll come to that as well. That is the next part of the session, obviously. And Shivam also has the same query. So a lot of people have the same query. So mind blend बोल रहा है. I think the orange t-shirt is quite aggressive and demotivating. Totally demotivating. जिस इंसान के सवाल दिमाग में इस तरह का कोई भी सवाल आता है कि मुझे टिप्स दे दो और स्ट्रैटेजी बता दो और मैं कैट क्रैक कर लूंगा, प्लीज डिमोटिवेट हो जाओ, प्लीज गेट लॉस्ट. जिस इंसान के दिमाग में इस तरह की चीजें आती हैं कि मैं बाकी सब चीजों के साथ कैट की तैयारी कर लूंगा, प्लीज गेट डिमोटिवेटेड, गेट लॉस्ट. बिकॉज ये सब चीजें ऐसे नहीं होती हैं. मजाक थोड़ी ना है. इट्स अ वेरी सीरियस एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग. Sir, I would like to just add one point over here. Mind blend हिंदी आपको ये एड्रेस कर रही हूं मैं. एक हिंदी मूवी आई थी मोहब्बतें. अगर नहीं देखी है आपने माइंड ब्लेंड, तो जाके देख लेना. उसमें अमिताभ बच्चन थे एंड शाहरुख खान. ठीक है. सो कोई ना कोई चाहिए होता है एक ग्रुप में, somebody who can give you very hard hitting facts and somebody who can show you the mirror. Somebody who is a tough task master. तो वो वाली मूवी जो मैं बोल रही हूँ, जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि राज सर कौन से वाले उसमें फिट होते हैं. तब आप आकर के मुझे बताना अगले सेशन में. सो एग्रेसिव और जो आपने बोला ना डीमोटिवेटिंग, वी आर टेकिंग इट. ठीक है, बट अगेन जो मैं आपको बता रही हूँ, आप याद करोगे इस चीज को 4 साल बाद. राज सर को याद करोगे 5 साल बाद कि भाई एक बंदा था who used to call the spade. He would never sugarcoat it. He would never be euphemistic about it. और ये जब हार्ड हिटिंग आपको मिलता है ना, कभी कभी जैसे घर में मम्मी और पापा गालियां देते हैं ना, तो आप उठ करके पढ़ने जाते हो. राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. Yeah, that's totally right. Vaishnavi, internship is not considered as work experience. No. Minimum percentile to get to good B school, cabbies, depends on the B school. Actually, what? See, the thing is, normally people feel the top 6 AMs are the best B schools.
in addition to it, there are multiple others. There's some grade B schools which will admit you at even 95th percentile, including the baby IIMs. Also depends on what course you want to choose. It's finance, it's marketing, it's branding. There are multiple courses over there. But all in all, if I talk about the grade A colleges, I would say anything above 95th percentile is a great score, not the top 6 IIMs. Okay, Yashvi, will there be different modules for ZAT, SNAP? Yes, exactly. There will be different modules, there will be different classes altogether, there will be different mocks as well. Okay. I think that's all. Now coming to this, mocks and sectionals. So someone is asking about mocks, when to start. So I told you already, June. And we open the mocks at that time only. There's some mocks which are free of cost, which will be happening pan-India to get a decent understanding of how we are performing in comparison to other people statistically. So mocks and sectionals, there will be 35 full-length mocks. When I say full-length mocks, it will be VARC, LRDI and Quant in the same order of 2 hours, 40 minutes for each section. The same way the CAT is. It's a simulation of the same CAT. And in addition to it, there will be 45 sectionals. 15 for VARC, 15 for LRDI and 15 for Quant. So overall, if you say, if I combine them all, it will be close to 50 mocks in together, in total. In addition to it, there will also be mocks for OMITs, other management entrance tests, be it ZAT, CMAT, SNAP, etc. And in this, there is something which I want to tell you is very important. Like last year, and every year we come up with something new. So last year, in fact, we developed an AI-enabled mock platform. And you know what, I loved it because I was I would say, a part of it, to develop it. So I know what exactly happened. So how we developed it, it's what's all about. So normally what happens when I was preparing for CAT myself and all of us, so to analyze a mock, we took, Kamal sir, I took 6 hours to analyze a mock in my time. That was 11 years back. आप कितना टाइम लेते थे सर? Sir, I think मैंने पहले ही बोला था, I never took a mock test. I first time wrote CAT in 2008. Oh. First time CAT में 2008 में attempt किया था and I had started teaching before that. 2-3 years it had been there. But मैंने कभी कोई एक भी mock test attempt नहीं किया. That's what I was saying. If you are good at your content, so I don't think. And like Raj sir भी पिछले बात भी कर रहे थे, वो harsh reality, hard सब की बात कर रहे थे. So बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. मतलब पता नहीं, my point of view is totally different. जिन्होंने engineering exams के लिए preparation किया है, they know that they need to do hard work because there is syllabus. CAT में there is no syllabus. Yeah. There is nothing. Aptitude. You just need to develop a lifestyle. And yes, you need to be true to your work. Whatever efforts you are putting in, आपको honestly सारा काम करना है. If you are doing your work honestly, sincerely, regularly, then it's not as tough as it may appear to be. इतना भी मुश्किल नहीं है. इतना भी मुश्किल नहीं है. So honestly, मैंने कोई mock test नहीं दिया है. So yes, but it takes time to analyze, certainly. Yeah. So I took 6 hours. I'll tell you why. Because obviously I went through all the questions which I did wrong or not attempted due to lack of time, or maybe I did not know. And even I look at the solutions of the questions that I did, just as to know a better way to approach, if there is a better way altogether. So I wrote those better ways. I also made an Excel sheet depending on, how much I did, how much I scored, how much I could have scored, what all mistakes I committed. So I came across, 7 to 8 different ways through which I could go wrong. Okay, and 4 ways through which I can go right. So all these things we discussed, our team discussed with the tech department, and we came across an AI-enabled mock platform. So we obviously fed some data to it, and then we realized that what we have made a platform which will reduce the time by at least 1/3, and more than that. So now when people are analyzing, they just have to mark what they have done, which will take 15 minutes, and after that, in next 15 minutes, they'll be getting everything, a proper analysis in terms of statistical figure, in terms of some bar graphs, charts, and also after that, what you need to do, what should be the strategy for the next mock, the questions that you did wrong, the same kind of questions also there, that will be strategy builder. So in a way, if you spend 2 hours after attempting the mocks on this on this platform, you'll feel that next mock you'll be already prepared for that. So this is something which we are actually very proud of, that we developed this, and once you start kind of witnessing it, you'll feel the same.
Well, so this is mocks and sectionals and analysis as well. Okay, before going further, there are certain queries. Sahiti says, I'm scoring 54% mocks. How do I increase my score? Sahiti, by analyzing it more and more, by not committing the same mistakes which you did in the earlier mocks. That is kind of, a no-brainer that how you have to improve. It's all about not repeating the same mistakes again. And by selecting the right questions. Yes, ma'am, you Generally, want to students add will something fail. over there? Ma'am, you want to add something over No, there? I was just adding that one point. You were giving a host of points, so I just said, that by selecting the right questions. Any other points anybody is feeling which I missed probably? Raj sir, Kamal sir, Sajjan sir? Okay. So please continue. Okay, all right. Now coming to Mind Blend Hindi. Okay, Mind Blend, we take that. Vanya Srivastav, well, once you start taking his classes, okay, that is all about that. At least 10 hours a day should be given for CAT prep to crack CAT 25. Jashanpreet, not really, not 10, at least 10 hours. You don't have that much time, guy. 24 hours are there, 8 घंटे सोओगे, बहुत कुछ करोगे. I don't want to get into details. 10 hours at least is not possible. It's impossible for everyone. You can do it once or twice a week, but not every day. So what I will suggest is just go through the process, follow it, and do what has to be done here, which I'm discussing over here. And whenever you get free time, let's say you get a Sunday or a weekend, probably on that day you can spend 10 hours. But वो 10 hours कैसे spend करने हैं, उसकी strategy भी we will keep on discussing in future. Okay. ठीक है. Okay. Now, analysis, which I've told you already, error tracker, all that stuff. Now, revision and shortcuts. This is the flagship program for CAT 25. It has started. So there are some people watching here who want to, like ma'am also suggested, कोई था ना वो बोल रहा था कि अभी CAT 25 हो पाएगा क्या? तो crash course join कर लो. So CAT 25 crash course already started, and at the same time next year we'll be starting the crash course for 26. This will be for the people who started today, who will be starting in the month of January, March, July, August. And even those who did not join, and in the end they were like, okay, let's write CAT in the month of September. For them also it's welcome. So crash course is obviously name is crash, so it's a very quick paced manner, and the questions, it's majorly question discussion, less of theory discussion. But because we already have so many modules which we discussed earlier, so we kind of assume and we encourage students to go through those modules before coming in the crash course classes. So crash course will be having everything which is there in the entire CAT prep. The only difference is that it will be really quick, and if it is quick, so it's challenging and with less time is left. So that is what we'll be doing. So in a way, you will be finishing your syllabus 4 to 5 times. Once with the live conceptual, then application classes, then through practice, then IMABC module, then and crash course as well. After that also be doing something. I'll tell you what. Well, last month, boost initiatives. So last year I did a workshop called Akhand Algebra part. It's Akhand because it went till 10 hours and 19 minutes, 10 hours and 19 minutes. I don't know if someone is there who watched it. Then Raj sir and I took another session which was 8+ hours, most difficult CAT LRDI sets. Then we again took Raj sir and I CAT full day arithmetic, 11+ hours. Then CAT Quant all formula revision, and in fact 2 to 3 questions came word by word in the real CAT the next day. So we're really very happy and proud at the same time. Okay, 20% dot solving, cut short module. Yeah, this is the new thing which we have done. Cut short is like so we don't kind of endorse shortcuts actually. Even I don't do it. So it's not essentially shortcuts. They are generalizations in mathematics. When I say generalizations, something happens in the same way. In some expressions, in algebraic expressions, sometimes in numbers, sometimes in arithmetic. So based on those generalizations, which can be applied through multiple other questions. So this module is about that. Okay, it has launched for this year. Yeah, I have a question. Yes, ma'am. You said you wouldn't endorse shortcuts. Yeah. Why is that? I mean, CAT is an exam that tests your time management skills. So isn't it good to always use shortcuts? No.
I'll tell you why. Not in life wala, but for the test I'm In asking. CAT also, yeah, yes. So as I always said, the CAT is a test of life. So I'll compare with that. So what happens? Let's say, ma'am, suppose I have gone to Ladakh on a bike ride twice, okay? And you call me and you're like, Abhishek, tell me, how to go to Ladakh. I want to go ride through a bike or maybe in other ways. So I'll be telling you, okay, do this, then go to this place, eat there, get fuel over there, all that stuff I'll be telling you, and I'll be giving you all those things because I have seen everything, been there, done that, and when you do it, you won't be able to get as much as I did. Never in life, right? So to respect and to understand and to appreciate the shortcuts, one has to go the long way, and that is the reason I don't endorse it. So when I say generalizations, it's like, okay, I'm going the long way and I discuss with you, ma'am, today I saw this, this is really beautiful. So there were generalizations which you will be aware of, but you have to walk that long way. So same happens with mathematics as well. That's why, not the shortcuts. So the बढ़िया था। irony of the मीठे situation. शब्दों में सारी Sorry. बात कह दी। बढ़िया, हाँ. एकदम अच्छे से बताया, मस्त मजा आया सुन के। हाँ, मैं कितने मीठे शब्दों में सारी बात। मैंने बहुत खराब बोला होता। सर आप भी बोल ही दीजिए, बहुत फैंस हैं आपके, सुनना भी चाह रहे हैं। क्या मेरे एक बार हाँ, आंसर बता मतलब दे। अगर शॉर्टकट खुद का नहीं है, तुम नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। फिर से बोलता हूं, if the shortcut is not yours, you will not be able to use it. For the shortcut to be used, you need to understand the premise. You need to understand the whole background. You need to go through the entire chapter really well. And then you get to feel the shortcut. You don't understand the shortcut, never. You cannot memorize the shortcut given by others, never. You feel the shortcut when you go through the basic concept. And then the second time or the third time, you will be able to use it. That is how the shortcuts work. बस इतना याद रखना है, ठीक है? तो सर ने जो बोला वो लॉन्ग वे वो यही है कि आपको वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, तब वो शॉर्टकट का एकदम से दूसरी बार तीसरी बार में आपको वो हिट करेगा कि अच्छा ये ऐसे काम करता है, एंड देन यू गो विद इट एंड देन यू विल बी एबल टू यूज इट हैप्पीली, तब वो आपका होगा. दैट इज द डिफरेंस मैम. शॉर्टकट कोई बता दे तो कभी भी यूजेबल नहीं होता. इट हैज टू बी फेल्ट, इट हैज टू कम कि मेरा है, हो गया अभी ये. क्या कमल सर आप म्यूट हैं? कमल सर म्यूट हैं, वो कुछ बोल रहे हैं. कमल सर आप म्यूट हैं. मैं ये बोल रहा था, आई वाज सेइंग दैट मैं बिल्कुल अभिषेक सर और राज सर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ. मैम ने जो शॉर्टकट वाली बात पे प्रश्न पूछा, तो आई जनरली से सेम थिंग दैट एनी फॉर्मूला, शॉर्टकट क्या में कोई फॉर्मूला भी है, दैट फॉर्मूला इज द प्रोडक्ट ऑफ समवन्स इंटेलिजेंस. To use someone's intelligence, you must use your own intelligence. आप बिना दिमाग लगाए किसी और के दिमाग से क्या करने वाले हो? गड़बड़ करने वाले. तो गड़बड़ करने से बचो. Use concepts. मतलब be conceptually better. Then you are able to use, जैसे सर ने बोला, बिल्कुल सही बात है. Exactly. सर मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का. जब बच्चा था तो my dad was in Air Force and he was, वो होते हैं ना internal promotions paper होते हैं. So dad and a lot of his friends who were very young at that time. I was a kid, small kid. So they were going through a lot of shortcuts. There's a book which I hope all of us know about that's called M. Tyra. सुना उसका नाम? M. Tyra is a book of shortcuts. So my dad was, going through it and he was like, तू भी पढ़ ले. So because I was always interested in mathematics puzzles, बचपन से था ऐसा, तो मैंने ठीक है पढ़ना शुरू किया. You know what? I could not use a single shortcut from that book till this age. क्योंकि वो अल्टीमेटली, मतलब ये एक भुक्तभोगी बता रहा हूँ मैं कि ऐसा क्या हुआ था कि मैं नहीं कर पाया उसको यूज, बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट इज व्हाट एग्जैक्टली इज इट, जो डिस्कस पहले हमने कर ही लिया है. सो एनीवेज, सो कट शॉर्ट मॉड्यूल इज ऑल अबाउट जनरलाइजेशंस, नॉट एग्जैक्टली द शॉर्टकट्स. वेल नाउ मैम, आपका आप सेटिस्फाइड हो इस एक्सप्लेनेशन से? अरे ऑफ कोर्स, मैं तो मतलब बच्चों की तरफ से एक आध कुछ पूछ लेती हूँ कि भाई जो वो सोच रहे होंगे तो चलो मैं ही पूछ लूं. आप लोग मिल करके इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिए कि बच्चे समझ गए उस चीज को. That's great. Now, this is something which I would say out of all the features that we have, I don't know which one is the favorite one, but somehow, if I was a student, I would have gone for this 24/7 doubt solving. So I worked with previous institutions, and even Kamal sir has worked there. Sajjan's also worked there. So sir, you might remember that what exactly happened there. If the students had some kind of doubts, they had to fill a form that this faculty is available at this time,
this week, this day, and when by the time they got their slots, their doubts were already solved. Yes, I remember. Right, Correct. right. Or they forgot about. यहाँ पे मैं चाहूंगा कि एक बार सज्जन सर, कमल सर, थोड़ा सा आप लीड करें इस चीज को. I'll just be back in 2 minutes. इस चीज को कॉल आ गया 20% सर doubt का. solving. So डाउट्स का कुछ ऐसा सीन होता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपना नाम एंड विद डाउट्स कि ये क्वेश्चन नंबर इस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 10, 15 ये डाउट्स मैं पूछने वाला हूँ. फिर आपको फैकल्टी असाइन किए जाते हैं, फिर आपकी बारी आती है 7-8 डेज में, और तब तक स्टूडेंट्स भूल चुका होता है वो डाउट्स. ऐसा कई बार हुआ है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. 24/7 डाउट सॉल्विंग इज समथिंग. As soon as you have the doubts, you can post it in our group and it will be resolved in 15 to 30 minutes at max. In case of quantitative aptitude. Apart from that, in VRC, the RC's part or LRDI takes some time, right, to solve RC or LRDI. But there is no foundation that you can ask questions from our content only. You can ask questions from anywhere, right? So, Kamal sir, आप बताओ आपके. नहीं, ये डाउट सोल्विंग अच्छा पार्ट है, बट जैसा आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि बच्चों का डाउट खुद ही सोल्व हो जाता है काफी दिनों के बाद, तो वो एक अच्छी बात है. अगर वो डाउट खुद से सोल्व कर पाता है तो क्या दिक्कत है. सो सभी चीजों का अपना फायदा भी है, नुकसान भी है. डाउट सोल्व करने के लिए इन iQuanta वी हैव दिस कंप्लीट एंटायर टीम. जैसा सर ने बताया कि मिनट्स में लेस देन 1 hour 30 मिनट्स में डाउट सोल्व हो जाता है. दैट इज वेरी गुड थिंग. उसका एक ड्रॉबैक भी मैंने बहुत बार देखा है. सेम क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड रिपीटेडली, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो करते हैं. फिर उनको ढूंढ के बताना पड़ता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ बता चुके हैं. दैट डिफिकल्टी इज आल्सो देयर, बट स्टिल ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि यू हैव समथिंग जिनसे आप पूछ सकते हो. अदरवाइज इन क्लासेस यू गेट लिमिटेड टाइम फ्रॉम अ फैकल्टी मेंबर, लेकिन बाद में भी आप किसी भी टाइम, ऑनलाइन का तो यही बेनिफिट है ना कि ऑनलाइन आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो. तो दैट इज अ गुड फैसिलिटी वी आर हैविंग हियर, एंड इफ यू यूज इट वाइजली तो सर्टेनली इज वेरी एनरिचिंग. लेकिन जैसे मैंने बोला कि इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है. आई हैव सीन मैनी क्वेश्चंस. सम टाइम जो है कुछ क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, कुछ उसका सॉल्यूशन भी लिख के दिया कि मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, है ना, एंड द डाउट सॉल्वर इज पुटिंग द एंटायर सॉल्यूशन. वो बोल रहा है भाई मैंने जो किया उसमें क्या गलती है वो बताओ. वो फिर से आंसर पुट कर देगा सारा. तो वो परेशान भी हो जाते हैं कई बार कि यार ये मैं पूछ क्या रहा हूँ, बता क्या रहा है. कई बार दैट काइंड ऑफ डिफिकल्टी इज आल्सो देयर. बट एज आई सेड कि इफ यू यूज इट वाइजली दिस इज अ बेस्ट फैसिलिटी. आई डोंट थिंक कि बाकी कहीं और भी कोई ऐसा कर रहा होगा तो अच्छा ही कर रहा होगा अगर कर रहा है तो. बट इज अ गुड फैसिलिटी वी आर हैविंग हियर, और बहुत सारे लोग हैं उस डाउट सॉल्विंग टीम में हेल्प करने वाले. सो दिस इंडीड इज अ गुड फीचर. एज अभिषेक सर ने भी बोला कि एक बेस्ट फीचर है, तो सर्टेनली इट्स अ गुड फीचर. Unless it's 24/7 doubt solving are not very much relevant these days. Chalo, next, cat books. So there are lots of cat books that you are going to get for practice, apart from the questions that you are going to get on dashboard, apart from the sectional test and all the videos. Apart from all of these, you will get these premium books on cat, and there are, I guess, 5 books on Quant, 4 books on logical reasoning and data interpretation, and I guess in RC there are 2 books. So a total of, I guess, you will get 12 books in total, with Quant formula books as well. All right. So then comes iQuanta Tech Tools. And in iQuanta Tech Tools, we have strategy builder, where you can find all the relevant college list as per your scores in academics like 10th class, 12th, and graduation, and the percentile you are targeting. And then that is why we have I am school predictor, cat daily target. This is the new feature that we have started. In that case, every day you are getting 5 questions for LRDI, 5 questions for VRC, 5 questions for Quant, and each section is of only 20 minutes. So overall in 60 minutes you have your daily practice, and this we have started 2 weeks ago, and this will go until CAT exam. Every day it's live, a new test is live every day, you can write it. Yeah, and this is a gamified thing.
So basically, people have the streaks like in Snapchat. So let's say I do my test today, tomorrow, day after. So I'll be having a streak of 3 days. If I break the streak, I'll not be penalized properly, but that kind of I'll get a penalty from, kind of a philosophical penalty. Oh, you did not do it, psychological penalty. Your friends are also there. They have the healthy competition. So this is going to, it's very encouraging and highly competitive thing. School predictor, as sir suggested already, it's like, based on what your profile is, what your marks are, just put it there and you will get which IIMs you'll be clearing or getting a call from. Same with strategy builder. So whatever you are not comfortable with, any topic, subtopic, you just fill it there and you will get the entire strategy how to do it. So it's a kind of AI enabled thing, and the strategy will be inclusive of daily targets, what you have to exactly do, what you have to skip, all that stuff will be there depending on your strengths and weaknesses. That is how it goes. So it's a tech tool actually. Well, then comes time to build the cat. Now, the next section which we will be discussing is the the kind of plan that we have, the plan that all students can follow for CAT 2026. All right. So here we go. things that are required to start the preparation. A lot of people are waiting for this, that what exactly has to be done, how to use the resources, what is the daily target. So we have made this over here. Things you should know before starting. CAT exam syllabus and paper pattern. For that I have made a video. You just go there on iQuanta's channel and type CAT 2026. You will get the entire details of it. The syllabus and the paper pattern. Basic calculations for quants and DI. For this, we have so many videos by Kamal sir also and by me as well. And I think Kamal sir, you just took a class on that, right? Basic calculations. That was a live class probably. So there are a lot of live classes over there. Just So search. one like Yeah, speed calculations. You will get 4 to 5 different videos. Basic calculation. This is very, very, very important. It will be helpful in quants as well as DI. Why DI? Because DI involves calculation. All right. Now, your target percentile as per your profile, you should know it. अब डिपेंड इसका मतलब क्या है कि प्रोफाइल के हिसाब से टारगेट परसेंटाइल. See, there are a lot of categories involved, right? And also the categories can be depending on the general OBC, all that stuff. Also male and female, that is taken care of. Kashmiri migrants, multiple categories. Armed force personals, armed force dependents, all that stuff is there depending on what category. The NC OBC, then creamy layer, then there is what do you call it, EWS, all that stuff is there. Depending on that, your percentile target would be different. And that is the reason, you should know that what your target percentile is. Which a lot of people ask me as well. And that is the reason that I tell them, be as detailed in your question as possible. When I say detailed, किस कॉलेज से पढ़ रहे हो, किस कोर्स में पढ़ रहे हो, 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या स्कोर्स हैं, वर्क है या नहीं है, ये all that stuff. So depending on all of it, you should be knowing your target percentile. For this, it will be a separate session altogether, and I think I'll be coming we all will be coming almost every month for discussing things like this. In case you want some kind of guided discussion or one-on-one discussion for this, which will be helping you after CAT, and sometimes before CAT as well. For 25 students, you can just kind of reach out to support number and connect with me directly. Need for coaching or self-study. This is something which you should know. So here we are not endorsing that you should go for coaching altogether. This is something which you should know कि coaching चाहिए कि नहीं चाहिए. इस बारे में मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि क्यों चाहिए होती है, क्यों नहीं चाहिए होती. बट मैं चाहूँगा एक बार ये बार कोई बात, शबाना मैम, अगर आप स्टूडेंट होती तो आप क्या सोचती कि कोचिंग चाहिए, सेल्फ स्टडी चाहिए, एंड व्हाट वुड हैव बीन योर रीजन? सर मुझे तो डेफिनेटली कोचिंग ही चाहिए होती, बिकॉज मैं कॉलेज में भी आई वाज वन ऑफ द बैक बेंचर्स जो कि खिड़की से कूद करके बाहर भाग जाया करते थे फॉर मूवीज एंड ऑल. तो जब तक मुझे ना कोई खदेड़े नहीं, जब तक कि मुझे कोई पुश ना करे डेली. सो कोचिंग में देखिए सर क्या होती है ना, आई गिव यू वन एनालॉजी जस्ट टू प्रूव दिस. आई टेल यू मतलब कि मैं क्या बता रही हूँ. जैसे अभी लास्ट मंथ आई जॉइन जुम्बा क्लासेस, ठीक है. सो मॉर्निंग में लाइक इट्स वेरी लाइक आई एम अ वेरी लेजी पर्सन कि अच्छा लेट से उठ रहे हैं टाइप्स. अब मैंने क्या किया, लाइक आई हैव गॉट फैसिलिटीज ओवर हियर, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर फ्री, ठीक है, जिम वगैरह. बट पर्पसली आई जॉइन द पेड वाला. तो पेड वाला में मैंने ज्वाइन किया और मैंने उसका एक अमाउंट पे कर दिया.
मैंने बोला अब कम से कम चूंकि मैंने पैसे दिए हैं, सो आई एम गोइंग टू वेक अप एवरी ऑल्टरनेट डे या जब भी जाना है, एंड आई एम गोइंग टू बी लाइक रिलीजियसली रेगुलर अबाउट दिस, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी लाइफ में इतना डिसिप्लिन देखा है, जस्ट बिकॉज आई पेड दैट मनी. एंड देन आई नो दैट देर आर ट्रेनर्स देयर, यू गेट अ कम्युनिटी देयर. तो ये पता, ये सारी चीजें होती हैं कोचिंग का, लाइक मतलब जो बेनिफिट्स होता है, इट्स नॉट जस्ट दैट यू हैव टू रीड द बुक्स एंड रीड द क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम. वो तो आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे बहुत सारे, बट यू इंटरैक्ट विद पीपल, यू फील सो मच फन, यू फील अरे वाह ये सब मैं मिस आउट कर रहा था. सो मेरे हिसाब से तो भाई दैट इज द बेनिफिट ऑफ कोचिंग. और सेल्फ स्टडी उस जगह पे आती है जब मैं ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हो गई 6 महीने 8 महीने के बाद, कि चलो अब तो मैं खुद से कर सकती हूँ, वो टेम्पो नीचे नहीं जाएगा. तो देन यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर सेल्फ स्टडी, एंड दिस इज माई परसेप्शन. Yeah. Anybody wants to add something over there? Raj sir, Kamal sir, Sajan sir, coaching or self study? मेन क्या है कि जो टारगेट आप कर रहे हो ना वो इतना मैसिव है, जो आउटकम, जो कैट का एग्जाम है, इसी के लिए पूछ रहे हैं ना कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग, जो आउटकम है क्या है, एमबीए के बाद क्या मिल रहा है आपको, वो आउटकम इतना मैसिव है, इतना बिग है कि इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है. इट्स ए कॉम्पिटिशन. इट्स नॉट लाइक 10th क्लास और 12th क्लास की आपको मार्क्स लाने 90% और 95% और 99%. यहाँ पे आपको कंपटीशन में बीट करना है लोगों को. तो जो भी हेल्प मिल सके, जहाँ से भी हेल्प मिल सके. अब देखो कहीं भी लोग एक्सेल करते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो या किसी भी सेक्शन में, चाहे वो एक्टिंग की बात हो, या हर जगह दे फॉलो अ मेंटर, राइट, Yeah. दे फॉलो अ ट्रेनर. वो इसलिए कि वहाँ पे कंपटीशन, और जहाँ भी कंपटीशन नाम की चीज़ है, 10th और 12th में कंपटीशन नहीं है. नहीं सर, क्या बात करो, वो कंपटीशन नहीं है. उसमें आप जितना पढ़ोगे उतना मार्क्स लाओगे, अच्छा, उस उतना तरह से. बेटर करोगे. Right. मतलब दैट इज अप टू यू कि आप 90% ला रहे हो, 99% ला रहे हो. यहाँ पे आप 90% ला रहे हो, 99% ला रहे हो. दैट इज नॉट टोटली अप टू यू. दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल कि वो उनकी प्रिपरेशन कितनी तगड़ी है. Right. तो अगर 4 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, जैसा राज सर बोलते हैं कि 10,000 12,000 सेलेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद की आप लाइफ देखो ना, उसके बाद आउटकम देखो कि कितना मैसिव है, कितना अच्छा है. Yep. तो उसके लिए क्यों रिस्क लेना. अगर उससे मेरा परसेंटाइल 5% भी बेटर हो रहा है, मैं कहूँगा 1% भी बेटर हो रहा है, तो उस 1% में आप डिफरेंस समझो कि कितना डिफरेंस आ सकता है आपके कॉलेज के सिलेक्शन में. नहीं, उस 98% से 99% में कितना बड़ा गैप आ सकता है, कितने अच्छे कॉलेज आप. तो क्यों रिस्क लेना इस पे. ये मेरे लिए तो इस पे डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए कि बस कंपटीशन है, वॉट एवर हेल्प यू कैन गेट Yeah. विद लिटिल बिट ऑफ मनी. 20 25 30 हज़ार पे हम बात कर रहे हैं, लोग 20 25 30 लाख पैकेज की बात कर रहे हैं, और 2-3 साल के बाद 50-60 लाख का पैकेज हो जाता है. मैंने कितने लोगों को देखा है, तो क्या ही सोच रहा हूँ उस पर. मेरे ख्याल से सर ऐसा है कि मेरा रीजन थोड़ा सा फिलोसफिकल होगा या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी होगा. सी व्हाट हैपेंस, ऑल ऑफ अस ह्यूमंस, हमारा ना क्यों हमारे यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, क्यों हमारे कल्चर बने हैं, क्यों माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, देयर इज अ रीजन. सो व्हाट दे हैव डन, आवर ancestors have done, they pass on the information, right? So that has happened for millions of years. But if we talk about CAT preparation, for that matter, so what these people have done, including me, all 5 of us, so we have done that for I mean, if I add everything, it'll be decades, right? So decades of experience, decades Right. of things that we have done, we can pass on that information in a precise Very form. short time. Yeah, and someone who does it on his own, on his or her own, they will be taking at least 5 years to get prepared for CAT. करेक्ट. मतलब कुछ level exceptions पे. हैं, वो अलग बात है, but then that is why not just CAT, for everything in life a guru is required. That is what my belief is. Anyways, coming to the next part of this, so September to December, the first 4 months. Okay. Okay. Now, first is building strong foundation along with CAT syllabus. So strong foundation is all about calculations, vocabulary, solving a few puzzles. So Sudokus, I would say, I would recommend Sudoku and crossword. As a kid, I did that a lot actually. And I think Kamal sir is also very interested in doing that stuff. At least Sudoku. Sir, बहुत किया होगा आप, मुझे लगता है आपकी बातों से, है ना? मैं 2 साल से बोल रहा था जैनम को सुडोकू की क्लास 1-2 करते हैं, बोले करेंगे सर करेंगे. नाउ आई एम सीइंग रिपीटेडली बार-बार सुडोकू का नाम लिया जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मुझे अच्छा
हाँ सर बहुत ही गजब की चीज़ है, मतलब मैं तो नशा था एक टाइम मेरे को उस चीज़ का, अब तो टाइम नहीं मिलता उन चीज़ों का, लेकिन हाँ इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, एंड ऑब्वियसली द कैलकुलेशन आर देयर। In terms of VARC, I would say vocabulary is there, grammar can be there. Ma'am, anything you want to add there? Foundation VARC में क्या हो सकता है बढ़िया? No, we have already discussed now VARC essentials, and Yes, then yes. we'll be pushing them for reading and all. So foundation mein mainly it's vocabulary and reading for English. There's nothing else that you can put. Right. So that's the second point. Daily article Yeah. reading. Eon, Guardian, Hindu, Wall Street Journal, etc. So we also have curated reading articles which we'll be sharing with you guys. Apart from that, Shaban, I'm in a regular classes, or maybe when I'll be telling some strategy, I will be discussing more such sources or sharing more such articles with you guys. You can just read some editorials. We're discussing on that as well. But this is something which is important. Daily puzzle solving, लिखा हुआ Sudoku, etc. Covering iQuanta basic modules, non-engineer Quant, engineers VARC, LRDI inception. This is essentials or inception. Setting up daily targets. So 10 Quant questions, 1 LRDI set, 1 RC sets. This is what you need to do for the first 4 months, September to December. All right. ये बहुत important है. In case you want to take a screenshot, you can just take that. I'll just be side okay for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now, next one, January to June, the 6 months of prep, which is the actual full throttle preparation. Completion of CAT syllabus in detail by covering all variety of questions. Your daily targets will be increasing at this time. 20 quant questions, 2 LRDI sets and 2 RC sets, which was earlier 10, 1, 1. Now it's 20, 2, 2. Start sectional test, 1 per week, per section. Tip by June, finish first full syllabus round. When I say first round, that means see, you'll be revisiting the syllabus. It's not that you'll be doing it just once and you'll be getting everything. That's not possible. As Jan Martel in one of his books called Life of Pi said, repetition is necessary for the training of not just animals but also humans. To keep on repeating, you'll be learning more and more. So that is why the first round will be in June, and then there'll be more such things, workshops, marathons, there can be boot camps, and then the crash course also there. Mistake to avoid: delaying mocks until perfect. This is very important, So Steve Jobs once said, you should start doing something when you're 70% ready, because you'll never be 100% ready. That is not possible. So the moment, and now how to calculate 70%? Because when we are dealing with the classes, dealing with all the course, entire syllabus, when 70% classes have finished, after that you should start taking mocks. That is the right time to start taking mocks. Right, sir? 70% पे करना चाहिए, I think. Sir, ma'am. और कितने स्लाइड्स हैं? 2-3 और है सर, 2-3 और है. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग अग्री करते हैं इस बात 70% पे शुरू कर देना चाहिए? क्या है? 60%. 60%. Okay. 50-60%. Great. Now, next is July to September. Next 3 months of prep. So here you'll be starting with mocks, one mock every 2 weeks in July, 1 mock per week by September. And the analysis which we discussed earlier through that ARL mock platform, time per question, skipped questions, repeated mistakes, all that stuff, you have to make a log of it. In Quant, you'll be doing high-level problem sets. High level is like, when multiple concepts are mixed, 2 to 3 concepts are mixed, which can be combination of time, speed, distance from arithmetic and equations, quadratic equations from algebra. So this is how concepts are mixed, and you'll find them in the level 2 assignments dashboard or the book or the IMABC. DILR, same thing, mixed level practice, 40-minute section tests, and treat mocks as mini CAT rehearsals, not just practice. Then comes the last 2 months where crash course will be starting. In this case, you would have to do 2 to 3 mocks per week, and strict test day routine should be there. Like jaldi sona hai, theek se khana khana hai, hydrated rehna hai, all that stuff. Focus on accuracy more than attempts, because CAT is a game of accuracy, not of attempts. It's a low scoring paper. People who have scored 50% are the people who have scored 99th percentile. So percentile. I hope you understand the difference. Build a personal strategy, because nothing can be universally true. So all the people have their own mindsets, their own backgrounds. Depending on that, by the time you would have done at least 10 mocks, you would automatically, your mind be making a strategy for QA, VARC, ILR. For example, an example strategy is,
In Quant, do the easy first sweep, that means the easy questions first, then mark time killers. Mark जो कि time खराब करने वाले हैं, questions को छोड़ देना है. VRC attempt RCs first, VLRs ये जरूरी नहीं ऐसा करना है. Depends on people to people, person to person. DILR scan sets, pick soluble first. Daily routine is revision, mock and analysis. So last year, we achieved more than 500 99 plus percentilers, and this year targeting 1200, like Raj sir said once, 1200 होना चाहिए इस बार. 26 early batches started. This is the exact summary of whatever we discussed. 400 plus hours of live interactive sessions, 20% doubt solving, and 35 full length cat little mocks in addition to all the modules that we have. So that'll be all from our side. And in case there are any questions, queries, any chit chat you guys want to have, then your queries are welcome. While you were speaking, अपने ऑडियंस में 3 लोग वर भसड़िंग. एक क्या हो गया? while you were speaking, 3 people were भसड़िंग in the audience. Okay. मैं बता रही हूँ, कुशाग्र, माइंड ब्लेंड हिंदी और जशनप्रीत. Okay. मतलब अगर एक्चुअल क्लास चल रही होती तो मुक्का मारी पीटी हो ही गई होती अब तक. Okay. EWS I am not going to useful. gym Yes, today. Mahan, it's useful. I'm not going to gym today. I'm here only. Okay. आज सर का चीट डे है. क्या समझ रहे हो तुम लोग? सर भी कभी कभी चीट कर लेते हैं. Jagvandan Singh, I discussed that earlier as well. 6 months, I told you, by the time you get admission, that is the month of June in a B school, until December, you can give your original certificate. It's very important that at least the teacher of your own brand should at least focus for the slide, and meanwhile, arey yaar, mind blend. Okay. Mind blend has an opinion, and it's a good thing. People should have opinions and they should speak out freely. That's a good thing, mind blend. Now, Jagvandan, बता चुका हूँ मैं, ma'am, for real, this mind blend, arey. It's okay, guys. We are Indians, we have a habit of dissenting. It's okay. पर हम अगर भसड़ नहीं करें कहीं भी तो ऐसा कैसे होगा? Exactly. That's our trait यार. ठीक वो है, जब चलता काम है. की बातें हो जाती है ना, तो ये सब चालू हो जाता है. जब लोग समझ जाते हैं. करते हो, हम भी करते हैं, मतलब ठीक है, मतलब होना चाहिए, मतलब इंसान ही नहीं है अगर वो ना करे तो थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए. That is also kind of management, right? And communication. Well, So audience, कोई तो क्वेश्चन होगा, कुछ और क्वेरी होगी आप लोगों के पास besides the normal regular ones. अगर कुछ है तो it's like now open for questions. Go ahead. और हाँ, जो लोग आप में से, वही जशनप्रीत, में यही सोच रही हूँ तब से कि मेरे तो सारा पूरा कुनबा यहाँ के अटैक किया हुआ है. तो आप में से जो लोग भी क्लास का वेट कर रहे थे, अब वो बिकॉज ऑफ दिस सेशन वी हैव नॉट बीन एबल टू स्टार्ट दैट सेशन, तो इसलिए अब उसको हम पोस्टपोन करेंगे. प्लीज माइंड मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है 300 क्वेश्चंस आपको काउंट डाउन करवाना. वो मैं करवा दूंगी. अगर एक आध दिन इधर उधर हो जाए, जरा सा आगे पीछे बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, तो प्लीज बी अ लिटिल एडजस्टिंग गाइज. But it's my responsibility, I'm telling you. 300 countdown will be done. Yeah. Isha, classes will be entirely in English. Don't you think so? Majorly, even like, I think 80% things we discussed were in English. Hindi was just for the sake of sometimes, having a icebreaker, chit chat. Chit chat, yeah, exactly. Yeah, fun, all that stuff. Nothing is lost in translation. Even if someone speaks any other language than English, it won't be lost in translation. Don't worry about that. And so I'll tell you something. I have worked in other places. Of course, you all have also worked in other places. But this is something that I'm really happy about, that all the 5-6 of us over here, I mean, everybody, irrespective of whether we teach VARC or not, all of us are able to speak decent English. ये मैंने notice किया यहाँ पे. So students should be really happy about that fact that iQuanta is giving them a package of faculty members, people who can actually speak decent English, not just English for the sake of English. So, I mean, वो जिसने भी वो query पूछी थी, I hope that's resolved. Yeah. Vishesh says, for engineers male, how difficult is to get to top schools, General 1? Vishesh, it's really very difficult because academic diversity points are factored in.
But yeah, it's difficult, I would say. But then don't worry. All you can do is control is your preparation, nothing else. We can't change the government schemes, right? We have to adjust with them, and that can be done only through more and more preparation. Okay. Mind blend, expressing your opinion. Yeah, you're welcome to express your opinion. That's not a problem. And thanks for having that respect for all the teachers. ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सर, बट जब क्वेश्चंस देखता हूँ तो पैनिक हो जाता हूँ सर, प्लीज़ कुछ सजेशन मिलेगा। इसका जवाब किसे देना चाहिए? राज से बहुत देर से चुप है। प्रैक्टिस की कमी है और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहे, मतलब प्रैक्टिस, सीधी बात। नहीं गलत है। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लाइन ही गलत है, सेंटेंस ही गलत है। अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो कॉन्सेप्ट दोबारा करो, सिंपल, क्यों कॉम्प्लिकेट करना? किसी और वीडियो से कर लो, कोई और सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लो जो पहले किया है उससे अलग, बहुत सिंपल है। अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों मान लिया कि कॉन्सेप्ट क्लियर है बट क्वेश्चंस हो रहे हैं? ऐसे कैसे मान लिया? क्योंकि अगर वो अंग्रेजी में कुछ होता है ना, इफ एंड ओनली इफ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों कॉम्प्लिकेट करना? वापस जाओ, वापस पढ़ो, दैट्स इट। कॉम्प्लिकेट करेंगे कुछ होगा नहीं, फायदा। This is true, sir. What you're saying is true. Even in VARC, na, people generally feel कि मैम सारा ना I can understand everything given in the passage, still I'm not able to solve the question. तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि बेटा उस illusion से निकलो कि आपको सब समझ में आ रहा है. First thing is you're not able to understand, so work on your interpretation. That is what is needed. So yes, completely right what you said. एक चीज़ में ऐड कर दूंगा, ओनली कैट का ये कंसर्न था। ओनली कैट यू कैन डू वन थिंग विच लॉट ऑफ पीपल हैव दिस प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आई थिंक what he means here that whatever concepts are there in the books or classes, he has gone through it, probably he is not able to implement it, right? I think that is what he means. I'm just assuming it, and if that is what you mean, then I would suggest going through the CAT PYQs once, starting with 2024 going till 17, whatever is available. And once you go through them, and you will be knowing actually how and where to use those concepts, some sub concepts as well. Like in CAT, there's some sub concepts, very simple things which probably you do not even feel they are concepts, but they can be used. So go through PYQs. They're the best sources of any kind of CAT prep, and watch the solutions. Only CAT in the audience, only CAT. मैं जवाब दे रही हूँ तुम्हारे उसका। पीजे को भी तुम पे गुस्सा आता है कि कौन बैठ गया आज मुझे सॉल्व करने के लिए। तो ना तुम इतने वीक कॉन्सेप्ट्स लेके और इतने वीक पेयरिंग सिस्टम्स नहीं सीखोगे और जाके पीजे को सॉल्व करोगे और एक्सपेक्ट करोगे सब करेक्ट हो जाए। प्लीज पहले उतरो, गेट डाउन फ्रॉम योर हाई हॉर्सेस। चलो, क्लास में अक्सर लग जाती है इनकी, मतलब मैं पकड़ती हूँ ओनली कैट को। रिपीट करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो किसी एक तीसरे चौथे टाइम में वो आ जाएगी बात कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है ना। यही चीजें यही काम करेगी और यही करती है। Yes. Devansh, do we really need iQuanta books and MBC for CAT prep? Devansh, you start with this, the proper course, and once your content is over, you want more practice, more things for practice, then you can subscribe for books and ABC. Depends. It's it depends on the case to case. So first start practicing. In 6 months, if everything is kind of exhausted, then you can go for them. Diet Coke, अच्छा खुशी हमें लग रहा था कोई कमेंट्स नहीं पढ़ रहा था, पर अच्छा ठीक है। सदन सर रियली इंस्पायरिंग, सो इंडिया अलर्ट सेट्स पे जो माइंडसेट इज नेक्स्ट लेवल। सदन सर की तारीफ है यहाँ पे। आप सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, रात से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा किसी से डरना भी चाहिए, डर के आगे ही जीत है। okay. हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं, डर के जीतने वाले को समथिंग। जगवंदन की एक क्वेरी है भाई, व्हेन विल क्लासेस स्टार्ट? आई गेस शुरू हो चुका है, नेक्स्ट वीक। तो फर्स्ट क्लास विल बी नेक्स्ट वीक, एंड और कुछ क्लासेस तो हो भी चुकी हैं। कमल सर ने भी लिया था एक क्लास, मैंने भी लेना शुरू कर दिया, मेरी भी हो गई है। एग्जैक्टली, जो यूट्यूब पे हो गई है, बट इन द पेड ग्रुप इट विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। Is it necessary to be proficient in Microsoft Excel before getting B school? Astha, you know what? It's not necessary. It's nowhere written, but I would suggest you that you should be, if not proficient, at least you'll be having intermediate proficiency for Excel, because that is going to help you a lot.
Otherwise, you'll be wasting time in the B school at least 2 weeks to learn that. So this is the right time. After CAT, you can just learn Excel. It's very important. How much profile matters for B school? Engineering to international competitions, participating matters. Vishesh, that doesn't matter really because there are no quantifiable marks for that. There's no empirical framework for that. What matters here is that if you have these things, let's say I have 2 people and I'm the selector, and those 2 people, one of them has loads of marks and both have the same kind of skill set, but one has competitions, but even I'll select him. So it would just be an added advantage, nothing else. Okay. So as of now, like daily QA questions, one LRDI set के लिए वो कहाँ से prep करना शुरू करना चाहिए? From books of a dashboard. Dashboard, Kushal. Dashboard. Any session about AI courses to pursue? Mindblend Hindi. After CAT is over, I would suggest. No, it depends. If you want to go into data science and analysis, you should probably go for courses like Gen AI that can help, but not required. Okay then. All right. So you will take your leave, and the next thing which will be happening is you and us will be meeting you in the Live classes. Okay then. Any other queries that you have, just put on the comments after the session is over, and we will personally reply back to you. अच्छा चलो 2026 के लिए जाने से पहले कुछ कुछ मैसेज दे दो आप लोग। और आज तो मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, हरगिज भी बता मैम दिया। आप कभी स्टार्ट नहीं करती हैं। उस दिन किया था ना, आपके बोलने पे किया था मैंने। एक बार किया था आपने। हाँ, तो आपके बोलने पे कर लिया था। अब आज आप लोग स्टार्ट करो। जय वीरू करेंगे आज स्टार्ट। आप दोनों हो हमारे यहाँ के जय वीरू। स्टार्ट अर्ली और स्टार्ट से ही फ्रंट लाइन पे रहो बस। मैंने तो इतना बोल दिया, कुछ बचा नहीं बोलने को मेरे पास। 26 के लिए यार, see, I'll tell you what, walk the talk is the thing. If you want to become a manager, start managing right away. And the thing that you can manage right now is your time and tasks through your CAT prep. That is the only thing I want to say. Yes, next, ma'am, अगला कौन है? राज सर, कमल सर बोलेंगे ना? कमल सर ने बहुत देर से कुछ नहीं बोला है। कमल सर बोले। तो राज सर वाली बात करी, स्लाइड्स थोड़ी बची थी, अब क्या बचा है? अरे मेरे बैटरी नहीं बची है। आप लोगों को CAT 26 के लिए एक मैसेज मैम ये पूछ रही है। सर आई हैव अ रिक्वेस्ट कमल सर, आप ना अच्छा सा कोई एक श्लोक के थ्रू लोगों को इंस्पायर करो आज। ओह यस। अरे कुछ भी, एक सिंपल सा ही सही, कुछ भी सर, मतलब somehow it sounds very nice and I don't know, आपको भगवत गीता के ही सारे आते होंगे I'm sure, क्योंकि भगवत गीता के जितने वो होते हैं ना, I keep reading on Google and I find them very inspiring. So I don't know any श्लोक of course, but सर जब पहला अर्जुन ने पूछा था, जब वो परेशान थे कि कैसे मैं करूं, तो श्री कृष्ण ने क्या बोला था वहीं शुरू कर दिए सर। सुनाओ सर, चलो। काफी सारी बातें हैं। अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा था तब अर्जुन का जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है कि एट व्हाट मोमेंट, अभी जो अपने बात कर भी रहे थे ना कि कोचिंग या सेल्फ स्टडी, तो व्हेन टू एक्सेप्ट ए गाइड और व्हेन टू डिसाइड योरसेल्फ, है ना। तो अर्जुन ने बड़ा अच्छा वहां पे श्लोक बोला था। सेकंड चैप्टर में 7th श्लोक है भगवत गीता में, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। अर्जुन एक्सेप्ट्स कृष्ण एज हिज टीचर एट दैट मोमेंट, कि मैं अपना सारा दिमाग लगा चुका हूं, मैं सारी सेल्फ स्टडी कर चुका हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो द मोमेंट व्हेन यू आर स्ट्रक, है ना, एट दैट मोमेंट यू नीड टू एक्सेप्ट द प्रॉपर गाइडेंस सो दैट आप आगे बढ़ सको। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन टू दैट कैट कोचिंग और सेल्फ स्टडी। और एक और मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, भगवान ने एक बड़ा अच्छा आंसर दिया एक श्लोक में कि जैसे जैसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कृष्ण सेज यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तथैव इतरः जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो जो भी ग्रेट लोग हैं वो जैसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं वो सबके लिए उदाहरण है, सब लोग उसको देखकर सीखते हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ऑल ऑफ यू पीपल, दोज हु आर वॉचिंग राइट नाउ,
कि आप जो है वो एग्जाम्पल सेट करो, आप अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। और आपके सामने यहाँ पर जितने लोग आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब अपने आप में बड़े एक्सपर्ट एक्सपीरियंस एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इनसे सीख सकते हो और अच्छा सीख कर अपने आप की लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सर दैट्स व्हाट आई विश टू। धन्यवाद ये मेरे को भी शामिल करने के लिए इसमें कि ये सारे लोग हैं। मेरे को तो लगता है मैं इतना हूँ, लेकिन मैं अच्छा लगा सुन के ये बात। सर एक बात और, सर बीच में एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं सबको जोड़ूंगा तो डेकेड्स हो जाएगा। कैसी बातें करते हो यार, दो दो ढाई ढाई तीन तीन डेकेड्स वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबका जोड़ोगे तो सेंचुरी बन जाएगा एक्सपीरियंस। सेंचुरी बन जाएगा। राइट राइट। अच्छा हाँ, ये जो है ना आज फ्राइडे है, जस्ट फॉरगॉट वीकेंड, आई मेंट वीकेंड, तो सैटरडे संडे क्लास होगी, कल से भी क्लास स्टार्ट है, डोंट वरी। नहीं देख राज सर। बोलूं क्या? हाँ Should I speak? यस यस यस। Of course. I'll repeat exactly the same things that I always say. The most important thing to do anything is intent. सबसे ज्यादा जरूरी चीज है नियत। अगर मुझे कैट की तैयारी करनी है तो कैट की तैयारी के बराबर का मेंटल एफर्ट करना होगा। अब वो टाइम कहां से आएगा? जो है उसी में से आएगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आई एम एन एक्टर एंड अ गुड वन टू। जब मैं थिएटर में जाता हूं, यू शुड सी हाउ आई बिहेव। चरणों में पड़ा होता हूं अपने टीचर्स के, सो दैट रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडेंस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडेंस, टोन और ट्रुथ, I'll choose truth any day. Any day, everybody will have to. Whatever is your emotional status, whatever is your emotional reaction to any setback that you come across, which is going to happen 90% of the times. आप सिर्फ 10 में से एक बार सक्सेसफुल होंगे, और वो बाकी के 9 टाइम्स के फेलियर पे भारी पड़ता है जब आप एक बार सक्सेसफुल होते हैं। हमें अपने जो भी फेलियर्स हैं वो एम्ब्रेस करके उनको एक्सेप्ट करना है। बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहीं से मुझे एक हिंट मिल जाए कि प्यार से बात करने से मेरा दिल रोता है उन 3,90,000 लोगों के लिए हर बार, और इसीलिए मैं हर बार वो मेंशन करता हूं। मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। And I really cry on the day of the result. ALP has seen it. ड्रिंक्स लेने के बाद या पहले दोनों टाइम रोता हूं मैं रिजल्ट के अगले 3-4 दिन कि ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था, इसका ये कम रह गया। बच्चों के नाम याद होते हैं। Cat is 2,000 times more brutal than the brutality that I expose. If you can understand that, please go ahead. If you are emotionally strong in that sense, please go ahead. Otherwise, please get lost. This is not the place for you. Because it is going to be really, really, really tough for you, boss. Brutal, yeah. मैं तो कम से कम लोगों की बातों का जवाब देता हूँ, प्रेजेंट हूँ। ट्राई करो कैट का नंबर ट्राई करने का, कॉल करने का। Yeah. So I'm just saying that everything is it bottoms down to only the intent. Everything else, any external factor, tone of somebody else, the way it is mentioned by somebody else, right? The strategy given by somebody else, the shortcuts given by somebody else, motivation given by somebody else, you decide whether it will work for you or not. Okay? Don't try to, yeah, that I have said in today's session also, don't try to manage. Decide and do. Because manage आप नहीं कर पाओगे। हमें पता है, नहीं पता है, गीता मैंने भी पढ़ी थी और मुझे कुछ चीजें उसके साथ जो प्राइमरली समझ में आई, 99% चीजें तो हमारे हाथ में है ही नहीं। 1% चीजें हमें लगता है कि हमारे हाथ में है। राइट कमल सर? और मजेदार बात यह है कि वो भी हमारे हाथ में नहीं है। सो आई एम अ फर्म बिलीवर कि 100% चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है
सिर्फ ये देखना कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, क्या इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी शारीरिक मानसिक क्षमता के बराबर है कि नहीं है, क्या मैं उस चीज के लिए ईमानदार हूं कि नहीं, क्या मैं आज रात को 2-4 क्वेश्चंस करके सोऊंगा, या बस हवाबाजी में स्ट्रैटेजी ढूंढता रहूंगा और 2-4 यूट्यूब वीडियोस देखूंगा जहां से मुझे कुछ टिप्स मिल जाए। ओ माय गॉड, यू आर मेकिंग इट इजियर फॉर कैट पीपल टू रिड्यूस द नंबर। ठीक है, सो चॉइस इज योर्स। या सो यहां पे जो है, हाँ मेरा हो गया, देख लो, बाकी आप लोग करो। हो गया, हो गया। Oh, done. या Okay, so it's me in the end. I have just one thing I think I would like to say. हमेशा ये होता है क्लासेस में, मैं देखती हूँ कि students come under my wing and they go under the wing of other educators also, but very often it happens that students have their cups full, या at least cups half full. ये मैं चूंकि अभी शुरुआत है आपका 2026 का, तो मैं ये आपको बोलना चाहूंगी कि नंबर वन, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो सम एजुकेटर्स, लकीली अगर हम हुए, आपने हमें चुना, ठीक है, सो प्लेस योर ट्रस्ट इन दोज एजुकेटर्स। ओके, यू मस्ट बिलीव दैट ओके, अगर ये बंदा या बंदी हमें दे रहा है ज्ञान, कुछ दे रहा है या कुछ भी अगर गाइडेंस दे रहा है, तो इट्स समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज और नॉलेज और समथिंग. So very often it happens, I see in the class, students sit with their preconceived ideas और pre-fixed ideas कि हम ऐसे बनाते थे, हम ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे करते थे, सर ने इस लॉन्ग कट से किया, हम तो इस तरह से कर सकते हैं, right? So what I'm saying is, आप please come to the class, please be under the wing of the educators, थोड़ा सा कप को empty करके आओ, and उसके बाद फिर देखो कि उसमें जो हम डाल रहे हैं वो आपको फायदा करेगा कि नहीं. बिकॉज आई अप्लाई दैट टू माई सेल्फ. मैं किसी से भी अगर कुछ भी सीखने जा रही हूं, सो आई हैव टू प्लेस माई ट्रस्ट, और सोचना है मुझे कि हाँ ये मुझसे तो बेहतर है ना, मुझे कुछ देगा तो हाँ इससे तो मेरे से तो बेहतर है. सो लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. हम इस एज में भी लर्न कर रहे हैं. फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव वी कीप लर्निंग. And the only thing is, the only way to learn is to actually keep your windows open, keep your heart and mind open. So join us with that open mind, positive attitude, and then nothing will stop you. और डोंट जॉइन अस। All right then. Take care, everyone. All the teachers and all the CAD aspirants. Hope you crack CAT with flying colors next year. And all of us make a culture which we make every year. And that's a beautiful culture. Good night, everyone. Good night. हेल्थ का Good ध्यान, night, sir. हेल्थ का Ma'am. ध्यान रखें, Good night. हेल्थ का ध्यान रखें। अगर हेल्दी हैं, खाना ठीक से खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो आप कोई भी लड़ाई लड़ लेंगे, ये हमेशा याद रखें। Okay, bye bye, guys, everybody. Have a good night. Bye everyone.